Good morning, esteemed delegates, respected speakers, and distinguished guests. Ladies and gentlemen, it is my immense pleasure to welcome you all to the Illness to Wellness Awareness Conference on Prevention and Management of Diabetes, hosted by the Illness to Wellness Foundation. Together, we are on the occasion of the forthcoming World Diabetes Day 2025 in the heart of New Delhi to address one of the most pressing health challenges of our time. So the next few hours promise to be incredibly insightful as we bring together leading experts to explore strategies, insights, and innovations to combat diabetes. I want to thank you to each one of you for your gracious presence here. And now we are all set to begin the formal proceedings of the day. For that, I would like to invite all our distinguished dignitaries to come for lighting the lamp. I request Mr. Anil Rajput sir, Chairperson, Advisory Council, Illness to Wellness Foundation, Padma Shri Dr. Anup Mishra, Dr. Anuj Maheshwari, Dr. Ashok Kumar, Mr. Rajesh Bhushan ji, and Dr. Shuchi Bajaj for the lamp lighting. So please give them huge applause. आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः 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 शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर् Thank you so much to all of you. May I request each one of the distinguished dignitaries to please come on the stage and have a seat, please. I request Mr. Anil Rajput sir, Dr. Shuchi Bajaj, Dr. Ashok Kumar, Mr. Rajesh Bhushan ji, Dr. Anuj Maheshwari, to please have a seat on the stage.
Now I request Mr. Rajesh Bhushan ji to please come on the stage. Acha, Anil Raj, please. Now I request Mr. Anil Rajput ji, Chairperson Advisory Council Illness to Wellness Foundation, to present the bouquet to Mr. Rajesh Bhushan ji. Please, sir. Let's give them a huge round of applause. Now I request Mr. Anil Rajput to please present the bouquet to Dr. Shuchi Bajaj. Please give them a huge round of applause. Now I request Anil Rajput ji to please present the bouquet to Dr. Ashok Kumar. तालियों की गूंज बस रुकनी नहीं चाहिए. And I request Anil Rajput ji to please present the bouquet to Anuj Maheshwari sir, please. Thank you all. Please have a seat. We now move to the significant part of our morning, that is the inaugural session. For that, please join me in welcoming Mr. Anil Rajput sir, Chairperson Advisory Council, Illness to Wellness Foundation, to deliver the welcome address. Sir, the stage is yours. Good morning. Mr. Rajesh Bhushan, former Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, and Chairperson, Governing Council, Illness to Wellness Foundation. Dr. Anuj Maheshwari, President-elect, RSSDI, Dr. Ashok Kumar, Director, Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Sciences, Dr. Sachin Bajaj, Co-Lead FICCI Task Force on Quality and Viability in Healthcare. On behalf of Illness to Wellness Foundation, I would like to extend a warm welcome to all the speakers, participants, and friends from media who have joined us for the awareness conference on prevention and management of diabetes. On the occasion of forthcoming World Diabetes Day, which is scheduled on 14th November. World Diabetes Day was established in 1991 by the International Diabetes Foundation and the World Health Organization in response to growing concern about the global rise of diabetes. It is observed every year on 14th November, the birthday of Sir Frederick Banting, who co-discovered insulin along with Charles Best in 1922. The blue circle, the symbol of World Diabetes Day since 2007, represents global unity in the fight against diabetes. Today, it has become the world's largest awareness campaign, reaching millions across more than 160 countries. Friends, diabetes is one of the fastest growing health
challenges of the 21st century. According to the International Diabetes Foundation, an estimated 588 million people worldwide are living with diabetes in 2024, a number expected to rise to 852 million by 2050. This surge poses a major challenge to the public health systems, economies, and societies across the globe. India, in particular, stands at the epicenter of this challenge. Nearly 89.8 million adults in the country are living with diabetes today, and this number is expected to exceed 156 million by 2050, making our country home to the second largest diabetic population in the world, after China, and unfortunately earning the title of the diabetes capital of the world. According to the World Health Organization, nearly 77 million adults in India live with type 2 diabetes, the most common form of the disease. While these numbers reflect a growing health concern, they also present an opportunity because unlike type 1, type 2 diabetes is largely preventable. Therefore, strengthening awareness and prevention will be India's most effective path to reducing the future burden of diabetes and empowering millions to lead healthier and longer lives. Besides this, what is also worrying is that 43% adults with diabetes in India remain undiagnosed and unaware of their condition until complications arise. This silent progression makes diabetes especially dangerous and costly to manage, which gradually damages the heart, kidney, eyes, and nerves. Over the past 2 decades, we have witnessed a tectonic shift in the way families eat, move, and live. Unhealthy diets, reduced physical activity, irregular sleep, stress, and long hours on screens have taken a toll on our health. Doctors have long warned that sedentary lifestyles bring with it a host of health risks. It is therefore the responsibility of each one of us, be it individuals, parents, caregivers, to make a conscious choice that nurture health and happiness at home and in the community. Yet, amidst this grim reality lies an encouraging truth. Diabetes can be delayed, controlled, and even prevented through small, consistent, and conscious choices. And this is where India's own civilization wisdom offers timeless guidance. Our ancient medical text, the Charak Samhita, Sushrut Samhita, taught that prevention, not cure, is the foundation of good health. They viewed well-being as a state of balance between diet, lifestyle, and mental harmony.
The goal was not just to treat disease, but to avert it altogether. This philosophy is profoundly relevant today. Practices such as yoga, Surya Namaskar, and pranayam improve insulin sensitivity, boost metabolism, reduce stress, and bring mental calm. Additionally, a balanced diet that includes whole grains, pulses, fruits, vegetables, low-fat dairy products, and adequate hydration, combined with regular physical activity, weight management, proper sleep, keeping regular sugar under control, and mental well-being, all form the foundation of diabetes prevention and management. Having said that, prevention begins with awareness, knowing the risk, recognizing the symptoms, and making small daily changes can go a long way in not only regulating blood sugar levels, but also improving overall vitality and quality of life. Towards this, the theme of Diabetes Day this year, Diabetes Across Life Stages, reminds us that diabetes can affect anyone at any stage, and therefore, care and awareness must evolve through every stage of life. The Illness to Wellness Foundation proudly endorses this message and remains committed to promoting awareness, prevention, and holistic diabetes management through education, advocacy, and lifestyle changes. Ladies and gentlemen, despite the enormous growth in our understanding of diabetes and its complications, we are still far away from bringing the situation under control. Therefore, this subject deserves our sustained and undivided attention. That is why gatherings like today's conference are so important. It serves as platforms for knowledge sharing, awareness building, and inspiring collective responsibility. We are joined by eminent personalities today who are experts in the subject area. I am sure that today's discussion will be both engaging as well as educational. I am confident we will have impactful takeaways from the program that will benefit the listeners and contribute towards a better strategy to address this complex topic. My request to all those who are present here to share their experience and knowledge that we gain from here with many more people, so that our message is not confined to these four corners where we are sitting. We should use our own social media handles to propagate this message, generate awareness, so that our effort convert into a movement. Thank you and Jai Hind. Thank you, Mr. Rajput, for such an inspiring start. I now request Mr. Rajput sir, so please present the bouquet to Dr. Anup Mishra ji. Please give them a huge round of applause. After this inspiring speech, I now request Dr. Anup Mishra ji and Mr. Rajesh Bhushan. I would like to first introduce Mr. Rajesh Bhushan ji, former Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India and Chairperson, Governing Council, Illness to Wellness Foundation. Please give them a huge round of applause.
And before we start with the keynote address, sir, I would like to request you please address the conference with your keynote speech. A very good morning to all of you. Mr. Anil Rajput, Chairperson Advisory Council, Illness to Wellness Foundation, Dr. Professor Ashok Kumar, Director, Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Sciences, and Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, which is a apex training and patient care institute under the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. Dr. Anuj Maheshwari, President-elect, Research Society for the Study of Diabetes in India. Padma Shri Dr. Anup Mishra, Chairman, Fortis CDOC Center of Excellence for Diabetes, Metabolic Diseases and Endocrinology. Dr. Suchin Bajaj, co-lead FICCI Task Force on Quality and Viability in Healthcare and founder and director of Ujala Cygnus Healthcare Services. Ladies and gentlemen, this is indeed a pleasure. All such occasions that the foundation organizes to draw attention, create awareness about various diseases and health conditions is always a pleasure because of multiple reasons. One reason is that I get an opportunity to interact with people with whom I have not interacted in a fairly long period of time. Let's take today Dr. Ashok Kumar. I used to interact on a daily basis when I was the Health Secretary of Government of India, and today I get another opportunity to interact with him. Dr. Anup Mishra, I interacted when I was a young director in the Ministry of Health, and at that point in time, I had no inkling that I would land up in the same ministry as secretary. And he was in All India Institute of Medical Sciences, and we used to talk of things like how to improve the food habits of young children and adolescents in school, what to do with school canteens, how to look at lifestyle changes, what to eat, physical activity, so on and so forth. Dr. Suchin Bansal, I have been interacting recently, but there's been a gap, so this is a welcome opportunity to again interact with all of you. So coming to the subject, you see, when I was the Union Health Secretary from 2020 to 2023, we used to say that India, our country, was on the brink of a metabolic health crisis. जब हम कहते हैं कि we are on the brink or on the precipice of a metabolic health crisis, what do we mean? We mean that a cluster of risk factors are suddenly increasing and increasing in a consistent manner across population, which is the public health view of this problem that we are facing. And what are these cluster of risk factors? We have a large number of people ever increasing who are suffering from high blood pressure. We also have people who are suffering from high or excess abdominal fat. कई लोग कहते हैं कि नहीं तंदुरुस्त है, वो तंदुरुस्त नहीं है. There is a abnormality, and that abnormality is increasing across board, across age groups. So this problem of excess abdominal fat, then abnormal cholesterol levels. So these cluster of risk factors increase the risk of heart diseases, they increase the risk of stroke, they make you more amenable to type 2 diabetes, so on and so forth. So when we talk of
diabetes, particularly type 2, I'm not referring to genetic factors, I'm not referring to certain families being predisposed to certain disorders, I'm referring to things that we can control but are not controlling. So, this cluster of risk factors is increasing, and therefore the attendant health conditions which will deteriorate and would manifest in multiple disorders including type 2 diabetes is also increasing across all age groups. And what is important is that these disease conditions are chronic. When we say chronic, it means they are long-lasting disease conditions. They are long-lasting health problems. And they can limit your daily activities. Why is this important? Because this has an economic cost. आपको मलेरिया होता है, there is a standard treatment protocol. Public health में जो हमारे PHCs हैं, primary health centers, which is the cutting edge level of delivering health services, they also know malaria में क्या करना है. They know what is to be done in dengue. They know what is to be done in TB. Similar standard treatment protocols are yet to be disseminated across primary, secondary and tertiary healthcare hierarchy in terms of non-communicable diseases, including diabetes. So that is what creates the economic impact or adverse economic impact, or what I call the economic cost of having diabetes. Your productive days, your productive months, your productive years are lost. So why is this a worrisome problem? It is worrisome because nearly 90 million adults, अभी राजपूत साहब भी इस फिगर को कह रहे थे, he was being more specific, I am giving you a round figure. 90 million, 9 करोड़ लोग, adults, which is roughly 10.5% of the population between 20 years and 79 years of our country. They are suffering and living with diabetes, making us, obviously, as you all know, the second largest diabetic population in the world after China. So therefore, this is a public health problem. This is a national economic problem. As I said, that there are certain precursors. For example, obesity is a precursor. And we are not as serious as we should be about obesity. One of the impact of the pandemic was that suddenly people started cycling, people started jogging, people started being more regular in their morning walks. But if you are living in Delhi, all these physical activities have an attendant risk factor. With 400 air quality index in the morning, or maybe 400 plus, you would think 10 times before cycling or running or jogging. So what do you do to ensure that proper physical activities, proper burning of calories that you are accumulating throughout the day happens? So that is a challenge for public health specialists. Now, I would like to draw your attention to another issue, which is very important. When we say that most of this is preventable, I am again talking of type 2 diabetes, what then becomes important is early detection. So once I detect and tell you that you have diabetes, you would ask me, so what? Ab main kya karu? So not only early detection is important, early referral is also important. Not only early detection and early referral is important, early bringing of that person under treatment is important. Then adherence to that treatment protocol or treatment regimen is important. Who will ensure all these things? Here the primary responsibility must lie with the state governments and the union government, because the role of tertiary healthcare facilities in the private sector come up only when people come to them, when they are referred to them. But people need to be screened. We need to strengthen population level screening. Only then we will be able to tell people
that you are suffering from obesity, you are suffering from diabetes, you are suffering from high blood pressure, and there is a mandate for population level screening in the programs that Government of India and the state governments run. For example, the health and wellness centers, which are, the earlier primary health centers, then the name changed and they were called health and wellness centers. Now they are called Ayushman Arogya Mandirs. So their role is to conduct this population level screening. The question should be, are they doing it effectively? Or are they doing it not only effectively but in a saturation manner? And once they do such screening in a saturation manner, only then they would know this is the percentage of obese people within the territorial jurisdiction of this health and wellness center. This is the number of diabetic people within the territorial jurisdiction of this health and wellness center, and then they would refer them to secondary or tertiary healthcare facilities where the role of people like Dr. Ashok Kumar, Dr. Mishra and others would come into play, because they are confined by the gatekeepers who actually refer such cases to them. So that is something that I wanted to draw your attention to. Before I conclude my address, I would also like to tell you that Government of India every alternate year conducts what is known as the National Family Health Survey, NFHS. This NFHS is done over a sample which runs into lakhs of people. So it is a statistically significant sample, and it is on multiple health parameters, but two parameters which are important, three parameters in fact, which are important from our discussion's point of view is blood sugar. They test blood sugar of that, lakhs of sample across the country, and obesity and blood pressure. Based on this, National Family Health Survey provides disaggregated data for states and for districts. And the National Family Health Survey for 2023-24 should be out probably in the next couple of months. So why is that important? Because suppose I am Kerala or I am Goa, I would know the percentage of obese people in my state. I would know the percentage of hypertensive people in my state. And once I know this, then I must use that knowledge. Similarly, if you are Fortis, you are Apollo, you are Medanta, you are some other, important Ujala Cygnus, some very important chain, and you are situated in multiple states, you would know the extent of obesity and extent of hypertensiveness and extent of diabetes in the state or district in which you are operating. And then you should be questioning that if the problem is this large, why is it that only so much people are coming to my clinic? Where is the uncovered differential? And once you start asking such questions, then obviously things will start to improve. I hope that this conference would be the beginning of such improvement. Thank you. Thank you, Mr. Bhushan, for sharing such a comprehensive and visionary outlook. We now like to invite Dr. Ashok Kumar, Director, Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Sciences, and Dr. Ram Manohar Lohia Hospital for another vital keynote address. So, please. Good morning, Namaskar. At the outset, I would like to thank Shri Anil Rajput ji for inviting me here and giving me opportunity to interact with all of you. Sir Rajesh Bhushan ji, Dr. Anup Mishra, Dr. Suchin Bajaj, Dr. Anuj Maheshwari, dignitaries of the dais, friends,
On this occasion of World Diabetes Day, and actually this awareness month is going on, as everyone is highlighting, and this program is also for awareness on diabetes mellitus type 1 and type 2. I would like to put attention to some more aspects for which new information is coming up. And I would like to start with, as Sir Dr. Rajesh Bhushan ji has highlighted the risk factors for diseases, especially diabetes, where we talk about our sedentary lifestyle, family history of diabetes, high blood pressure, obesity, and high cholesterol. But if we talk of women, and especially pregnant women, which is an important group of our population, then diabetes in pregnancy can be pre-existing diabetes or a new development of diabetes during pregnancy, which is called gestational diabetes. And the relationship of blood sugar and adverse pregnancy outcome is linear. There is a direct proportion between the level of blood sugar and the outcome of pregnancy. So it is important that during pregnancy we control blood sugar, we manage diabetes, and simultaneously we have to take care of other life, which is fetus, the developing fetus inside the uterus. Because there are many complications which can set in during pregnancy, and most of you will be aware of all these. If we talk of mother during pregnancy, there is high risk of hypertension in diabetic mother. Then there is high risk of obviously cesarean section, there is high risk of birth trauma and other complication because of uncontrolled diabetes, leading to increased birth weight of the baby. And then there is risk of complications during pregnancy and during labor because of the size of the baby, in terms of trauma to the birth canal or injury to the baby also. The important thing which is to be noted is when the baby is delivered in the neonate period within 24 to 48 hours, there are high chances or risk of metabolic abnormalities also in the newborn. And in the adulthood, or when the baby is growing into and going to the phase of older life, then there is risk of obesity in the childhood. There is a risk of development of type 2 diabetes mellitus and development of metabolic syndrome. So these complications can set in the adulthood of a child who is born from a diabetic mother. So there is a very long association from the pregnancy to adulthood. So one has to be very careful, and awareness is very much needed. We all know the mainstay of the diabetes is lifestyle modification, where we have to take care of the diet, our nutrition, as well as our change in the lifestyle in terms of exercise, regular habits. But I would like to emphasize on the long-term complications in the mother as well as the baby who are born of these diabetic mother. So this is an area of concern for all of us. If we talk of mother,
there is 7 times higher risk of developing type 2 diabetes later on. And 50% of the women will develop in 10 years. The other complication which can set is the cardiovascular event after the delivery, and the risk is 2 times more when a diabetic mother or we can say GDM mother delivers, the patient with gestational diabetes. For the baby, there are 2-fold risk of overweight and 4 times risk of metabolic syndrome. So we have to take care intrauterine exposure to maternal pre-existing diabetes or gestational diabetes. Offspring can have abnormal glucose metabolism which may manifest in 24 to 48 hours in terms of hypoglycemia or other electrolyte imbalances, and later on as a childhood obesity, and in the adult age the problem of diabetes, hypertension and metabolic syndrome. So what I want to emphasize here, that is why it is important to follow up these pregnant ladies in the postpartum period. After delivery, we should not leave them alone. There is a need to increase the awareness. These mothers should be tested every 1 to 3 years depending on the policy of that area. If routinely we do check-up and follow-up and we do testing for diabetes around 6 weeks after delivery, but if it is normal, we should not leave them. We should be following them up every 1 to 3 years and keep on testing. Simultaneously, if there is a high risk factors, then we can increase the frequency of testing. So it is important again to highlight, to sustained approach should be adopted, and we should increase the awareness about healthy living. And I just would like to say the message that lifestyle intervention, even outside pregnancy, for this cohort of pregnant women is very important, and the lifestyle modification or changes, whatever we advise them during pregnancy, it should be continued later on also to maintain healthy lifestyle, healthy living, so that these complications in the postpartum period or later on, maybe after 10 years, 15 years, these can be minimized. And I think this is the right platform with the Illness to Wellness Foundation, that these type of awareness should be raised and emphasis on healthy living is made. Thank you very much. Thank you, Dr. Kumar, for that important perspective. It is an honor to introduce Dr. Anuj Maheshwari, President-elect of the Research Study for the Study of Diabetes in India, for his special address. Sir, the stage is yours. Respected dignitaries on the dais and off the dais, in presence of my mentor, Dr. Anup Mishra, it is my great pleasure that I am getting an opportunity to speak something. I have been told by Dr. Rajesh Kesi that I should reflect what RSSDI has done in the last 1 year. We have done our presence in the Mahakumbh. We have done our 10 into 10 blood pressure challenge in diabetes patient, in which we have measured about 2,17,000 people's blood pressure. We have done the Save the Lives campaign, and many such campaigns we have done. We have started the rural diabetes care recently, in which already we have adopted about more than 10 villages across the India, and our target is about 200 villages. So Dr. Rajesh Kesi wanted that I should highlight this. But later I decided what we are doing, everybody knows about that. It is being highlighted in one way or another way. More important, what is to be done.
and what we could not do yet, and what we are really focusing and we should focus, that is addressing disparities in diabetes care. If we look towards those disparities, probably we shall be able to move it on to fill it the gap which we are facing. I believe that diabetes works as a mirror that mirrors our demographic transition as well as economic transition, especially in last 30 years. The way we have progressed economically, the way we have progressed demographically, one of my previous speaker was saying, and if you compare the abdominal obesity from nowadays to the 30 years before, you will find a big transition has occurred. Similarly, fertility rate has come down, which is required to maintain the population. It is 2.1 and we are currently at 1.9%. But still our population is rising. We are now the largest population of the world, even more than China. Although we are next to China in the diabetes patient, but we have crossed the population of the China. So these are the multiple disparities. And in fact, how does it work as a magnifier? Diabetes has really magnified the health care disparity and health care gap in the equity of our population. It has really magnified how we are not being able to reach each and every person. Instead of initially it was thought that diabetes would be a disease of the affluent class, diabetes would be a disease those who are having much to eat and those who are doing the overeating, but it's not true. In our country, diabetes is a disease of those who are taking birth as a low birth weight baby, those who are having those who are not having the foods, they are getting the diabetes. So there is something, these disparities are to be addressed. The rapid increase in the driven by factors like urbanization, lifestyle changes, aging population, global economic transition, what I just focused on. Now come over to the diversities. Disease patterns based on the demographic, genetic, geographical, socioeconomic and behavioral factor. So these are the multiple variabilities which are to be addressed. Understanding these diversities is crucial to identify at-risk population, tailoring interventions, and implementing effective management strategies across the region. So the global burden of the type 2 diabetes varies significantly across countries and regions, influenced by factors such as age distribution, ethnic differences, economic status, cultural practice, and same we can see in our country also. Every state is having different as far as these age distribution, ethnic differences, economic status, cultural differences, and because of what? We are having different data in different states. But one thing is common in all states of the country, that is all our population, whether it is in Kerala or it is in Punjab, they all are 70 to 80% eating carbohydrate. And that is the similarity across the country. This is the trajectory, what you can see, number of people with diabetes in million. In 2000, there were 151, and it is expected in 2024, 589. This is the world trajectory. But if we go for the Indian trajectory, in 1994, we were having about 32.9% population having the diabetes. In 32.9 million people, sorry, not percentage, 32.9 million people were having the diabetes. In this 2000, this has reached to the somewhere around 40 million. But now it has crossed, as per the ICMR in diabetes study, 101 million, and before me, one of the speaker has told about 90 million or 89 million. There is different studies which are giving difference, but I think everybody would be agreeing that it is 90 million and more than 90 billion. So this is more than 2.5 times progression in 20 years could occur. The risk factors which are causing this dietary shift: processed food, sugar sweetened beverages, and the most important, I understand, the physical inactivity. Physical inactivity, because of the lot of methods has been developed which makes our life more and more luxurious. That may be car, that may be air conditioner, that may be many of the things which
doesn't allow us to move more, that has really caused a lot of impact in our, and in fact it is comparatively relative. Many times people say that in villages diabetes is there. Why villages is diabetes is there? Villagers are doing a lot of physical activity. But my answer is that if a woman who was going to take the water about 5 to 10 kilometers for her day-to-day needs, and now progress came and government has made a hand pump just outside the home, or a water tap is outside the home, this activity has been stopped. And this is making them inactive. And this is making her more and more prone to develop the metabolic disorders. So progress is the another side of the coin of increasing diabetes. So somewhere this diabetes mirrors our economic progress, but at the same time also mirrors our demographic progress. Of course, ethnicity, high blood pressure already has been discussed by my previous speaker. Importance of the understanding epidemiological diversity is another very much important, because every group of the population, every geographical area is having different needs. So first, our focus should always be on the reducing the health disparities. Everybody should get the similar amount of the healthcare facilities, which could be in creating the equitable healthcare access. Resource allocation should be done as per the need. Identify the regions, population with higher prevalence and risk allows for better allocation of the resources. And similarly, the public health policies which are targeting specific epidemiological patterns help in crafting effective prevention and management strategies. So there are the multiple differences, age and demographic factors like younger population shift. Now diabetes is occurring in younger population. When I was doing the MD, at that time it was said that if somebody is coming above 60 years of age, then only you have to check the blood sugar level. Later on, it came that every person who is coming after the 40 years of the age, he should be checked blood sugar. Now, after the 20 years, people are coming with the hyperglycemia. They are coming with the blood sugar high. So now the population shift is towards the younger side. At the another end, aging population is also increasing. By our best efforts for the good health, whether we could do or not do, but we could reach up to the extent that we could increase the life expectancy of our population to a sizable level. Because of what? Large number of the geriatric population is also before us. Now we have to take care of that also. Increasing the population which is of the elderly or old age group. Because of what we are getting the Alzheimer's kind of the challenges, we are getting the memory loss kind of the challenges, dementia kind of the challenges before us, and of course depression. Because once the people, those who are living longer, and many of them without their spouse, one of the spouse most of the time is lost up to the reaching of that age. So they becomes quietly alone and depression comes to them. That again becomes the increasing factor for hyperglycemia and their stress. Of course, the urbanization effect, you all know about that. So age and demographic factor, if we further elaborate, women are on the higher risk of the diabetes, either it may be in the terms of the cardiovascular disease or in the terms of the other complications. So what we see in here, then when type 2 diabetes is there are a lot of disparities like in women and men also. When there is a diabetes, then if we look for the BMI, of course, men and women are on the same risk. But if we look for the fatty liver disease, we see that women are on the higher risk. Waist circumference, we see that almost both are on the similar risk. But if we talk about the waist circumference, women are on the higher risk. PCOS makes the women on the higher risk. Prior GDM makes the women on the higher risk. If we look for the testosterone level, it increases in the women and decreases in the men. Where it is needed more, it is going down. And where it is not needed, it is going up. And because of what, women are developing a lot of secondary sexual character as well as PCOS kind of the problem. Similarly, if we look for the clinical features in type 2 diabetes, we see that age at diagnosis is more in the reducing faster in the males as compared to the females. Hypertension is more in the females as compared to the males.
Recently, a study, I was a part of that study, it has been seen that housewives are maximum on the hidden risk of the hypertension. They never check their blood pressure. They keep on taking the blood pressure and living with the blood pressure that makes them more and more irritable and more, you can say that with the depression also. Obesity is again more among the women. Hepatic fat, almost similar, but insulin resistance is increasing faster among the women. If we look for the diagnosis, impaired fasting glucose, we can see in the males more, while the impaired glucose tolerance we can see among the females more. Complications, more of the heart failure, more of the CVD, more of the CVD mortality among the females. Renal insufficiency, more renal failure, more albuminuria, you can see among the females, while the albuminuria you can see among the males. Incidence and progression of the diabetic retinopathy may be the similar in both the genders, but inadequate preconceptional care making more and more perinatal complications among the gestational diabetes, especially among the females. Diabetic foot is more commonly in males. Amputations are more commonly in male. Neuropathic pain is more commonly in female. Pain intensity is more commonly in the females. So prevalence of the diabetes among men and women, if we compare, then we can see that till the age of the 65 up to 670, we are having the higher risk of the diabetes among the males. But after that, females are just coming across. And women with type 2 diabetes face up to 50% higher risk of the cardiovascular disease than men. Genetic variations they are also predisposing, plays a significant role in the development of the type 2 diabetes. What is the combined effect of the genetic and socioeconomic risk on the prevalence of type 2 diabetes and obesity? That is again very important. Once we look forward to this combined high genetic and socioeconomic risk, once we combine the genetic effect and socioeconomic effect, then we can see that it is 7-fold and 3-fold increase respectively in type 2 diabetes and obesity. Means 7-fold increase in the type 2 diabetes and 3-fold increase in the obesity. Urban versus rural divide, you all know about that. Number of adults with the diabetes living in urban and rural area. In 2024, the picture is like this, and 2050, the projection would be 3 times more than the picture is like present. So higher socioeconomic status to be a strong determinant of the diabetes, and it is more concentrated among individuals with higher socioeconomic status, while the poorer groups experience lower quality care of the type 2 diabetes. But the participants with the lower socioeconomic status had higher risk of diabetes compared with those with the higher socioeconomic status. Poor health related behavior and limited access to health care are important pathways for increased diabetes risk related to those with lower socioeconomic status group. So community cultural barrier, we all know about that. Environmental barrier, that is also giving rise to the pollution, is one of the important factor which is giving rise to the diabetes. Apart from that, some of the things like violence is also one of the important factor which is giving rise to the diabetes. And after that, 43% population lies undiagnosed in our country with the diabetes. So screening and diagnosis, pharmacotherapy for the global access and equity, these are the more important thing to be listened by the doctors and to the healthcare providers. Patient engagement and education is more important for all of us. What we can promote at our own standards, at our own level, that personalized education by skill development as well as community support. Challenges in clinical management are, of course, there are certain resource limitation. Clinical inertia is also there from the doctor side. Sometimes we delay the insulin initiation by ourselves, and health literacy gap is also there. So these should be addressed by workforce, which is already shortage, but we can look forward for the increasing. Of course, there are funding limitation and systemic overload is also. So research and data gap is also there. So I always request to all RSSDI members in my organization to do more and more research, keep more and more data. Whatever patient you see, keep records of that, and whenever you find that it is publishable, it must be published. Digital health and remote care is important because in our country, 4,000 experts are there and needs of the experts is 22,000. How can we reach
to each and every person which needs us. 4,000 experts cannot fulfill the requirement of the 22,000 people until unless we do not utilize the digital health, telemedicine and remote care. So a lot of opportunities from the global collaborations may come up. I am not discussing here because this is not needed here. Precision medicine and prevention would be the future direction, and call to action is really the bridging the gap is needed. We could improve the access, promote healthcare education, support the research, lifestyle management should be more and more promoted, community-based programs should be more promoted, policy strengthening and enhancing the monitoring with public health intervention is the things which can really bridge the gap of the healthcare disparities towards the equity. Thank you very much towards equitable global diabetes care. Thank you so much, Dr. Maheshwari, for such an insightful data sharing with us. We now request Padma Shri Dr. Anup Mishra, Chairman Fortis, CDOC Center of Excellence for Diabetes, Metabolic Diseases and Endocrinology, to share his insightful speech. अगर मैं हिंदी और इंग्लिश में बोलूं तो कोई आपत्ति तो नहीं होगी, राजपूत साहब? तो पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं राजपूत साहब को, क्योंकि ये वन टाइम एफर्ट नहीं है उनकी तरफ से. दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर सेवरल ईयर्स नाउ, और आई रिमेंबर द फर्स्ट engagement that he had with me was during the COVID. It was wonderful. And so his continued commitment is something to be appreciated. So I thank you for that, sir. My thanks to Rajesh Bhushan ji. He remembers, well, I don't remember. He remembered my presentation during that time, and मैं उस समय बहुत चाइल्डहुड ओबेसिटी में मैंने काफ़ी रिसर्च करी थी और बहुत पेपर्स पब्लिश किए थे. तो दैट्स व्हाट आई प्रेजेंटेड, एंड रियली अप्रिशिएट योर रिमेंबरिंग दैट. बट मैं एक वाक़या आपके आने के पहले का बताता हूँ. मैं 2001 की बात है, जब मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में था और हमारी टास्क फोर्स बनी थी कि नेशनल डायबिटीज़ कंट्रोल प्रोग्राम बनाया जाए. तो उसमें मैं, डॉक्टर तलवार और भी लोग थे. तो हम गए और हमने प्रेजेंटेशन दिया हेल्थ मिनिस्ट्री के सामने. तो उसमें हमने बताया कि भाई देखिए ओबेसिटी है, जैसे कि अनुज ने कहा. तो उस समय मुझसे एक रिमार्क करा गया उनका कि आप ओबेसिटी की बात कर रहे हैं, डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो माल न्यूट्रिशन है, अनीमिया है, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ है, क्या बात कर रहे हैं आप? दैट वॉज 25 years back. We warned at that time that this is coming. So this has come, and in a big way, and which Anuj, my friend, I'm not a mentor to him. Anuj is my friend, and I'm glad that he's president of RSDI, because he'll propel RSDI forward in many ways. So I thank him for giving that presentation so that you were well aware of what is happening in the diabetes arena. What I am going to do is not give you any statistics or figures or complications or anything like that. What I am going to give you is what has changed in the diabetes arena. What has changed? What we learned in 2000 or 1990s, 2000, when I was assistant professor at All India Institute, and now. कैसे प्रैक्टिस हमारी चेंज हो गई, हमारे क्या थॉट्स, कंसेप्ट्स क्या चेंज हुए. दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज यही मैं कहता रहता हूँ. जो मैं कहूँगा वो कोई ऐसा नहीं कि आप ही मैं कह रहा हूँ, मैं आप ही लोगों को कह रहा हूँ. मैं सब पेशेंट्स को कहता हूँ, सब लोगों को कहता हूँ कि ये चीज़ जो है ये चेंज हुई है. तो क्या चेंज हुआ है? 2000 में हमारा दिमाग केवल शुगर पर लगा रहता था. और आई एम श्योर आप लोग में से कोई जो मरीज होंगे उनका भी दिमाग शुगर पर भी लगा होगा. इसको कहते हैं ग्लूकोसेंट्रिक अप्रोच. आपने फिगर देखा, ओ फास्टिंग शुगर हमारी 180 है, और ये तो प्रॉब्लम है, हमको जाना पड़ेगा डॉक्टर महेश्वरी के पास दिखाने. लेकिन और फैक्टर्स सारे मिस कर दिया आपने. आपने केवल एक फिगर देखा और उस पर ही कंट्रोल किया.
नंबर 1, और स्पेशली वेमेन का बहुत बढ़िया तरीके से अनुज ने कहा, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। वेमेन का स्पेशली हमको फोकस करना है और मेन का भी, ऑन स्ट्रेंथ। जो लोग कहते हैं साहब आप क्या कह रहे हो, स्ट्रेंथ की क्या बात कर रहे हो, हम कोई वो थोड़ी ना WWE रेसलर थोड़ी ना, आप स्ट्रेंथ की बात करो ना। स्ट्रेंथ आप में ऐसी होनी चाहिए जो एज अप्रोप्रिएट स्ट्रेंथ हो आपकी। और स्ट्रेंथ ऐसे नहीं, हम तो 60 मिनट वॉक करते हैं हमारे में स्ट्रेंथ है, नहीं, आप में नहीं स्ट्रेंथ है। आप जब तक 3 तरह के एक्सरसाइजेज नहीं करेंगे तब तक आप में स्ट्रेंथ बनेगी नहीं। आप कार्डियो रेस्पिरेटरी फिट हो सकते हो बट कोर स्ट्रेंथ आपकी जीरो। ये मेरे में हुआ, मैं बहुत सोचता था कि मैं तो 1 घंटा वॉक करता हूँ, मेरी बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ है। जब मैंने अपनी मेन कोर स्ट्रेंथ को एसेस करा, किसी ने और ने एसेस किया, तो पाया कि ये तो बिल्कुल वीक है। तो पेरिफेरल स्ट्रेंथ, कोर स्ट्रेंथ, कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस, ये एक एक्सरसाइज से नहीं आएगी आपकी। आपको साइकिलिंग, वॉकिंग, एरोबिक डांसेस, ये कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस है। और आपको वेट्स के साथ एक्सरसाइज करना 5 मिनट, या रेजिस्टेंस बैंड्स के साथ, विमेन में मैं कहता हूँ, वो रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज हैं, उसमें मसल की स्ट्रेंथ आएगी आपकी। और तीसरा भी एक एक्सरसाइज है जो कि हम रिसेंटली सारे लोगों को कहते हैं, वो बड़ा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि ऑफिस में बैठे काम करते होंगे और कहते हैं हमारे पास एक्सरसाइज का टाइम ही नहीं है। वो है काफ मसल स्ट्रेचिंग। काफ मसल जैसे ये है, इसको ऊपर करा, 10 सेकेंड तक ऊपर रखा, फिर 10 सेकेंड नीचे रखा। ये मैं ऐसा नहीं कह रहा आउट ऑफ हैट कि मैंने बना लिया कोई चीज़, ऐसे नहीं, कुछ नहीं है। क्लियर साइंटिफिक स्टडीज आर देयर कि अगर आप काफ़ी काफ स्ट्रेचिंग करेंगे, 200 इन द मॉर्निंग, 200 इन द आफ्टरनून, 200 मे बी मोर, your blood sugar will fall actually, your circulation will improve, your nerves will be better in the feet. So देखिए अब मैंने क्या कहा, 3 तरह के एक्सरसाइज, कार्डियो रेस्पिरेटरी, रेजिस्टेंस एंड ब्लड सर्कुलेटरी एक्सरसाइज। और चौथा योगा है, सॉरी, जो लोग योगा के बहुत वो हैं फैन हैं, आई एम नॉट वन ऑफ देम, एंड सो योगा इज ओनली 4th in my list of exercise. If you passed all these exercise, you can do whole day yoga. It really doesn't matter to me. तो ये अगर आपकी कोर स्ट्रेंथ है, और ये सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि शुगर का नंबर छोड़िए, आप कोर स्ट्रेंथ की बात करिए पहले। तो नंबर 1 ये है, अगर आप स्ट्रांग हैं, आपका शुगर का नंबर हाई भी है थोड़ा सा, you will not get affected. This is the magic of the things. तो नंबर 1 बात ये हो गई, चेंज इन द थिंकिंग, हमारी द वे वी अप्रोच द पेशेंट। नंबर 2 बात है इंपॉर्टेंस ऑफ एडिपोसिटी। अब कई लोग यहाँ पर होंगे, कहेंगे हम तो पतले हैं, ये क्या बात कर रहे हैं एडिपोसिटी की, आप फैट की बात कर रहे हैं। मेरे को ना, आप पतले हैं डजंट मीन दैट यू डोंट हैव फैट। अगर आप फैट मॉनिटर करेंगे अपना यूजिंग बायोइम्पेडेंस कंपैरेटर्स और समथिंग, यू विल फाइंड दैट यू विल हैव हाई फैट। अगर हाई फैट नहीं भी होगा तो आपके लिवर में ज़्यादा हाई फैट होगा, और उसमें नहीं होगा तो पैंक्रियास में होगा। कहीं ना कहीं हाई फैट इंडियंस में होता है। ये हमारी रिसर्च 3 डिकेड्स की है, तो मैं कोई प्रेजेंटेशन नहीं दे रहा हूँ उस रिसर्च में, लेकिन मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि अगर आपका वेट भी कम भी है तब भी आपका फैट लिवर में भरा हुआ। एंड एडिपोसिटी इज एट द कोर ऑफ योर प्रॉब्लम्स। अगर आप लिवर से फैट हटा दें, अपना फैट कम रखें, और बाकी सब जगह फैट कम हो जाएगा बाय डूइंग अप्रोप्रिएट एक्सरसाइजेज विच आई हैव टोल्ड यू एंड सर्टन डाइट्स, यू हैव वन द डे। अदरवाइज यू हैव नॉट विनिंग, सॉरी, by decreasing sugar you are not winning. So that is something। हमने अभी एक यूके के बड़े विद्वान लोग हैं, उनके साथ बैठकर एक एडिटोरियल लिखा, एडिपोसिटी एट द कोर ऑफ डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज। अब ये इसके साथ जुड़ा हुआ है कि हमारे में कितना वेट होना चाहिए और हमारे में कितना वेस्ट सर्कमफ्रेंस, विच डॉक्टर अनुज ने बताया आपको।
हमारा पैरामीटर्स कम है वेस्टर्न उससे. अगर आप कहेंगे BMI 30 इज नॉट द BMI. 23 is the cutoff for BMI for Indian population, and waist circumference 90 for men and 80 for women. अगर आपके पास टेप है या आप कोई वो अपने ट्राउजर सिलवाते हैं, प्लीज पता कर लीजिए, because that is the most important thing. Single parameter of waist circumference is the most important thing for you. अगर इसका बियॉन्ड आप जा रहे हैं, आप एडिपोस हैं, आप फैट हैं, तो आप दिखते होंगे कि नहीं साहब हम ठीक हैं, बट आप फैट हैं. तो ये पैरामीटर्स वेस्टर्न पॉपुलेशन से कम हैं, क्योंकि हमारे कम पैरामीटर्स पर ही सारी चीज़ें हो रही हैं जो कि वेस्टर्न पॉपुलेशन में बड़े हुए BMI पर होती हैं. और जो आजकल की दवाएं हैं उसमें सबसे पहले हम यही देखते हैं. देखिए ये भी चेंज है थिंकिंग. पहले हम देखते थे कि कौन सी शुगर की दवा इफेक्टिव है, आज हम देखते हैं कौन सी दवा फैट को कम करे. ये चेंज मेजर है. नंबर 2 हम देखते हैं एक और चेंज ऑफ थिंकिंग हुआ, कौन सी दवा ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करे. तो देखिए एक दवा है जिसका नाम है सल्फोनाइल यूरिया. आप लोग में से बहुत लोग लेते होंगे, उस ग्लिमिपराइड लेते होंगे, डायमाइक्रोन लेते होंगे वगैरह. उसका कोई काम नहीं है, शुगर कम करती है और कोई काम नहीं है, ना लिवर पर काम, ना हार्ट पर काम, ना कुछ काम. बेकार दवा. आज हम बेकार कहते हैं. 30 साल पहले उसको बहुत इंपॉर्टेंट समझते थे. मेरे फादर डायबिटिक थे, वो इसी तरह की दवा लेते थे, बस एक ही दवा लेते थे. तो अब हमारी दवाएं ऐसी होनी चाहिए जो कि शुगर को भी कम करे और किडनी को भी बचाएं, लिवर को भी बचाएं, हार्ट को भी बचाएं, पैर को भी बचाएं. यही डॉक्टर अनुज माहेश्वरी चारों तरफ लेक्चर देते रहते हैं इसी चीज़ के लिए. तो पहले की दवाएं पीछे चली गई और आपकी दवाएं आगे आ गई, और उसमें से बड़ी इफेक्टिव दवाएं, बड़ी असरदार, दुनिया में धूम भी बचा दी है कुछ दवाओं में. उसको अच्छी तरह से यूज़ करना पड़ता है. तो ये आपको मैंने बता दिया. तो तीसरी चीज़ हो गई कि ऑर्गन प्रोटेक्शन इंस्टेड ऑफ शुगर, ऑर्गन प्रोटेक्शन, फिटनेस इंस्टेड ऑफ शुगर. और आखिरी बात मैं आपको बता रहा हूँ जो कि शायद सबसे ज़रूरी है और सबसे गड़बड़ तरीके से मैनेज होता है डॉक्टर्स की तरफ से भी और पेशेंट की तरफ से, वो है कोलेस्ट्रॉल. तो भूषण साहब ने कोलेस्ट्रॉल पासिंग में बताया, लेकिन कोलेस्ट्रॉल का महत्व बहुत ज़्यादा है. अगर आप सोचते हैं कि डायबिटीज़ का इलाज केवल शुगर, और आपने बताया साहब फिटनेस, मैं फिट भी हूँ, मुझे शुगर भी ठीक है, मेरे ऑर्गन भी प्रोटेक्ट हो रहे हैं, तो मैं तो प्रोटेक्ट हो रहा हूँ. नहीं, आप नहीं प्रोटेक्ट हो रहे हैं अभी भी, क्योंकि ये गाड़ी 2 लाइन पर चलेगी. एक आपका डायबिटीज़, ऑर्गन प्रोटेक्शन और फिटनेस होगी, और दूसरी तरफ कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट होगा. अगर कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट नहीं हुआ तो ये गाड़ी पलट जाएगी कभी, चाहे जो भी आपका हो डायबिटीज. तो लोग कहते हैं अरे साहब ये दवाएं तो ठीक है, ये क्यों दी गई है, इसको छोड़ दो, बंद कर दो, इसके बड़े साइड इफ़ेक्ट हैं. यूजलेस थॉट्स होते हैं कई लोगों में कि साहब बड़े साइड इफ़ेक्ट वाली दवाएं. कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है. कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन. अगर इंडिया में कि सबको लेनी है, पूरे पॉपुलेशन को, तो कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन लेनी है. तो साहब ये 4 चीज़ें चेंज हुआ है थिंकिंग में. और अगर इस तरह से हम बात करते हैं, पेशेंट सब सुनते हैं. हमारे पेशेंट, आप लोग, आई एम श्योर सम ऑफ यू आर पेशेंट, you are intelligent people, you understand everything. This is how I open my conversation. I don't open my conversation by looking at the sugars. I open my conversation by these. After having made a patient understand, then I open कि आप कितनी शुगर है आपकी, आप बताइए बाकी सब क्या है. तो this is what I wanted to say, because this is what, if अगर आप में से कोई वो हैं, कोई पत्रकार हैं, तो ये आपको वो करना है, क्योंकि सारी जनता को ये बताना है हमको कि ये चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. मैं आपका धन्यवाद देता हूँ सर. और भूषण साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर. और अनुज, ऑलवेज अ प्लेजर टू सी यू. थैंक यू बजाज साहब. थैंक यू एवरीबॉडी. Thank you, Dr. Mishra, for such wonderful guidance. And thank you to all the doctors for such profound insights. We now invite Dr. Shuchin Bajaj, co-lead FICCI Task Force on Quality and Viability in Healthcare and founder and director, Ujala Cygnus
healthcare services for his concluding remarks. Thank you very much, respected Shri Rajesh Bhushan ji, Shri Anil Rajput ji, Dr. Ashok Kumar ji, I think he's just left, Padma Shri Dr. Anup Mishra ji, Dr. Anuj Maheshwari ji, my colleagues from FICCI, honorable guests, friends, ladies and gentlemen. Namaskar and a good and a very healthy morning to all of you. It is a privilege to be here today, and it is my sincere thanks to the Illness to Wellness Foundation, its leadership and its advisory council, and all the delightful and distinguished speakers before me for their insightful contributions. Anup Mishra sir put a personal face to all the statistics and the stories that we had been hearing, and having something really personal and close to heart, I think always hits you more. So I will try and put a personal face to the systems thinking around diabetes that we are trying to develop. We already know that as per the statistics that we've been hearing for a long time, more than 90 million diabetics in India. And almost 1/3 of them are going to end up into kidney failure, we know that. More concerning is more than 40% of diabetics in India are undiagnosed at any point of time. So these have to have a face, right? I see them on a daily basis. I see a young mother in Uttar Pradesh diagnosed very late in pregnancy at one of our hospitals in Moradabad. I see a truck driver in Haryana who cannot take a day off to see a doctor because that means lost earnings. I see a teenager in Punjab losing his health to screen time, to laziness, to poor lifestyle, to poor dietary choices. I see an elderly gentleman in the Kumaon region of Uttarakhand where we have hospitals who cannot reach the doctors even if he wants to because there is no transport. All of these I see on a day-to-day basis. And these are all the faces of diabetes at a systems level in the country we are facing right now. Diabetes definitely is not just about high sugar, as Anup Mishra sir said. It is about what high sugar steals. 30 to 40% of all kidney failures in diabetes now are due to, in India now are due to diabetes. We are amputating 1 foot every 4 minutes due to diabetes. So by the time our 1 hour long session has ended, 15 people have lost their limbs to diabetes. Rajesh Bhushan sir spoke about the economic impact of diabetes. We need to assess the true economic impact. The direct cost of the disease is something that all of us know and measure. Right? If a patient comes to me with kidney failure, with gangrene of the foot, I can pat myself on my back very nicely and say, oh, we are a very affordable hospital, we are champions of Ayushman Bharat, we'll cut your leg for free, we'll put you on dialysis for free. If you had gone to Delhi to a big city hospital, you had spent maybe 5 lakhs, 10 lakh rupees on your disease. But is that 5 lakhs that the patient spent the true economic cost of the disease right now? It's not, right? The future earnings that the patient now loses because she is on diabetes, she is on dialysis twice a week, she doesn't have a leg, she can't really go back to the factory or the field she was working in, means that she has lost future earnings to the tune of lakhs, maybe crores of rupees. And the scariest cost of the disease, which we forget to measure at all, is the intangible cost of the disease. Because now you are out of a job, you will pull your children out of school and start sending them to work. Children that could have done something amazing in their careers. I have a colleague who drives me around to all the hospitals. We have hospitals spread out across small towns of North India. I drive with him all the time. He tells me that till 6th standard, he used to come first in races and mathematics. Every race in school he would win, and mathematics he would score 100% marks all the time. Then his father died suddenly, he doesn't know why. So his mother pulled him out of school and said, you have to work, we have to earn something. So he started doing odd jobs, finally ending up as a driver, earning just more than minimal wage, I think.
He could have been something of a person in sports or something doing in mathematics. And I speak this from my heart because my father used to say, make kites for a living early on, when he came to Delhi as a refugee, he used to make kites for a living. Luckily, he survived. And he made sure we studied. I got into a government medical school, and this is the reason I'm standing here right now. If he had died early, I may have been making kites or running a stall somewhere. So this cost of the disease is something that's quite unthinkable, and that is why screening, prevention and awareness must become national priorities rather than just sick care, rather than more dialysis centers, rather than bigger hospitals. Even though we run 26 hospitals, our main day job is running centers where sick care is provided more than health care. But at my heart, I am a preventive and a primary care physician. And as a clinician, I've learned that diabetes is not a moment, it is a lifelong journey. And the earlier we intervene in that journey, the better the life we protect. So we do a lot of Sehat Chopals going village to village for precisely this purpose, creating awareness, improving health seeking behavior, making sure that diabetes is detected early and managed in say 300, 500 rupees a month rather than the cost shooting up into lakhs and crores of rupees due to the fact that we detect only when complications occur. As co-lead of the FICCI task force on quality and viability, I strongly believe that quality is a right, not a privilege. Prevention must be incentivized and not incidental to running big hospitals. Technology must democratize access, not deepen divides in the forms of having more robots or more linear accelerators, and affordability and dignity must be protected principles. India is doing a lot for that. We are building strong foundations in the forms of Ayushman Arogya Mandirs, NPCDCS screenings, Fit India programs, nutrition programs, generic availabilities at the Jan Aushadhi Kendras. Now we have to scale and sustain them. We have to get the private sector involved. But we must remember that the government, the doctors and the private sectors cannot do everything. We have only a few thousand endocrinologists for 150 crore people. So society has to lead this change. Diabetes cannot be fought in ICUs and dialysis centers alone. It has to be fought in homes and kitchens. Your kitchen is your pharmacy. 80% of this disease management, I truly believe, belongs in your kitchen. Schools and playgrounds have to be the battlegrounds that we start this fight on, because the earlier you teach the children proper health-seeking behavior, the earlier you make sure that they don't lay down fat cells early in their life, the easier this battle will be. This battle has to be fought in workplaces and community halls, in panchayats, mohallas, temples, gurdwaras, even on WhatsApp groups. We deride our WhatsApp warriors a lot, but this battle, I think, we need all of us to pitch in. We need to make sure that the daily habits we build are towards more of health rather than towards more of sickness. As Ghalib said very famously, वक्त करता है परवरिश नस नस की, रोग पलता है छोटे छोटे ख्यालों में. Time nourishes every vein in the body, but disease begins quietly in small daily choices. So on the eve of World Diabetes Day, let us commit to detect early, to treat early, to prioritize lifestyle change, to take care of the last mile, and to build a healthcare system where quality and affordability coexist. If we act together, all of us, clinicians, hospitals, policymakers, civil society, media, families, then India will not only manage diabetes, India will lead the world in preventing it. Thank you very much. Jai Hind. Thank you, Dr. Bajaj, for such thoughtful and engaging remarks. With this, we conclude the inaugural session. And now I request Mr. Anil Rajput, sir, to present the mementos to all our distinguished guests and speakers. To start with, I request Mr. Rajesh Bhushan ji to come on the stage, to come on the front so that we can present you memento. Let's have a huge round of applause.
I request Anil Rajput sir to present the memento to Dr. Anuj Maheshwari sir. Now I request Anil Rajput sir to present the memento to Dr. Anup Mishra ji. I request Anil sir to present the memento to Dr. Shuchin Bajaj. I request all of you, please come in the front so that we can have a group photograph. We are now starting with some engaging panel discussions. Gentlemen, let's settle down to start with panel discussions, please. Talk about nurturing healthy futures, tackling diabetes in children and growing adults. For that, I would now request our moderator, Dr. Rajesh Kesri, Member Advisory Council, Illness to Wellness Foundation, and Member National Executive Committee, elect RSSDI, to please come up on the stage. Dr. Rajesh Kesri ji, please give him a huge round of applause. And our expert speakers, Dr. Mudit Sabharwal, Director and Consultant Diabetologist, Dharma Diabetes and Metabolic Clinics, Delhi and Gurugram, Senior Consultant Diabetes and Endocrinology at Fortis Laugh MA Hospital, New Delhi. Let's give him a huge round of applause. Ms. Sana Khan, Director Growth, Twin Health India. Please give her a huge round of applause. Major General J.K. Bansal, Senior Consultant Endocrinology, Primus Super Specialty Hospital. Last but not the least, Dr. Sanjay Rajpal, Country Manager, YPSO Med India Private Limited. This session, we will be exploring the rising cases of type 1 and type 2 diabetes in children and adolescents, the role of genetic risk and family lifestyle, and understanding metabolic health in youth. Crucially, we will look into how to screen overweight, high-risk kids early, promote nutrition and physical activity, and utilize technology in care, such as digital tools and wearables, to prevent long-term complications. So I request Dr. Kesri to lead the discussion with our distinguished panelists. The stage is yours, sir. Thank you so much. First of all, I would like to thank Shri Anil Rajput ji from the Illness to Wellness Foundation. I have not seen a single person so committed to the health and wellness of society. I've been working with him since almost a decade now, conducting wellness programs, healthcare prevention and awareness programs right in the societies, in the colonies where people live, making them aware about non-communicable diseases like diabetes, high blood pressure, screening them,
giving them advice, providing treatments. So it has been a commendable work. And his commitment has been such that it has been going on before COVID, during the COVID, and now after the COVID also it continues. So I would request all of you to give a big hand to Shri Anil Rajput ji. Thank you so much. So we have a very distinguished panel. We have people from different spheres of diabetes and chronic disease care. And I think it is a very fit panel to discuss something which has already been talked about by all our chief guests and our special guests. That is the rising incidence of diabetes in children. Just a question to all of you. How many of you know of children, have heard or seen at least one child with diabetes? Please raise your hands. आप में से किसी ने देखा है कि बच्चे को डायबिटीज हो, कोई जानते हैं आपके अड़ोसी पड़ोसी दोस्त? So yes, I see almost 10 hands raised. So, and I see that these were not doctors. So if in a group of almost, I would say 500 people gathering, we have almost 10 hands who know someone with diabetes in children. So this tells us about the extent of this problem. Are you aware that a person with type 1 diabetes, a child with an individual with type 1 diabetes would have an average lifespan of almost 40 years, not more than that, whereas the average lifespan of an Indian is more than 17 years? Is that fair? It is possible for even a person with type 1 diabetes to have an average good healthy life, but somehow it doesn't happen. So let us start the discussion with type 1 diabetes. I would request Dr. Mudit to acquaint us with what is type 1 diabetes, why is it so special, why are we talking about it, and why are we opening our discussion with type 1 diabetes? Well, thank you, sir. First of all, my compliments to Anil Rajput sir and Illness to Wellness for repeatedly holding these programs, and these programs are extremely important for the society itself, not just for us. Well, type 1 diabetes is something which is mostly immune mediated. So it's something which happens in children. It's in simple words, it's a kind of diabetes where our body is not able to produce enough insulin to control blood, keep the blood glucose levels in control. So our immune system attacks its own beta cells, which are provide insulin producing cells, and ultimately leading to an insulin deficiency in the body, and hence our body is not able to, our pancreas are not able to produce enough insulin to control the blood glucose levels entering in the body itself. अगर सरल शब्दों में बताएं तो आप में से कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिसको इंजेक्शन लेना अच्छा लगता है, जो अपनी इच्छा से इंजेक्शन लगाएंगे? है कोई ऐसा? हाथ उठाइए। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। मेजर साहब, टाइप 1 डायबिटीज के बच्चे के साथ क्या होता है, बताइए। देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न इन्होंने किया है। बिकॉज यू नो द टाइप 1 डायबिटीज इज ड्यू टू lack of insulin, which is by destruction of all the beta cells in pancreas. And so far there is no research, nothing has come out which can give some permanent treatment. Of course, that research is going on, beta cell transplant, stem cell therapy, immunotherapy. So all the time it has to be managed by insulin. Now giving insulin is very, very difficult in case of children. Moreover, because the diabetes has started in the early stage, so they have to have they are likely to have complications like retinopathy, early cataract, kidney, nephropathy, and nerve. That is very, very important because when they get the peripheral neuropathy, in foot they don't know that yes, there is no sensation and likely to get injured. Now comes the question, how to treat. Treating is giving insulin, and insulin giving in children is very, very difficult. As has been, nobody is ready, we adults don't accept it.
how to convince children. Secondly, in case of adult, you can have a balance of diet and insulin, but in case of children, that is a very, very difficult thing, how to do that. So, it is very important that yes, we diagnose children at early stage and how it is being, because you know, when we talk about, say, high sugar, high lipid, high blood pressure, these are the silent killers. Up to certain time we do not come to know, but in case of children, there is a deficiency, or in type 1 diabetes, there is the deficiency of insulin, so they will develop symptoms early in the form of polyuria, polydipsia, polyphagia, you know, they will have the excessive thirst, they will have excessive hunger, and they will pass urine more. At the same time, fatigue, etc. In those cases, they have to be given treatment. Now, there are the certain challenges in the family, giving insulin. In the society, say for example in school, they may require insulin in school may not be having facilities for giving insulin. And in the society, in the sense, as has been talked about, now diabetes can be managed by the rich people, but poor people, from where they will get these injections, they cannot get them in tablet. So the facilities to be made available that they must have insulin access as well as the devices by which they can do it. And moreover, there are certain challenges. Challenge in the sense the child who is having diabetes, once he go to school, then there is a kind of stigma that he is having this problem. So all these things has to be taken care of, and we must have something very important, that what was told by Dr. Bajaj, that kitchen is very, very important, 80%, because these days the children, they take food, they don't take food, they go to the canteen. Canteen should be banned with serving all these fast food and all. So the policies to be made, rather than giving lecture, we must work on ground. Then when this food will not be available, then they will not eat. In front of me, there is some sweeties there, I will eat. If it is not there in front of me and I am having only some good thing, then I will eat that only. So these are the very, very important thing. And which is now three good things which I noticed told by Dr. Bajaj. One is kitchen, one is mandir and Gurdwara. Mandir, there should not be any laddu. Gurdwara, Kada Prasad, they all are sweet and giving fat, and which we all talk, but that has to be implemented. So I think the bottom line is good sleep, good exercise, and good food. If we inculcate this habit in the children, then they will not have problem in future also. This at least I realize now I don't have any compulsion, but I get up at 4 or 4:30, do my morning walk, exercise, and we are very particular about the food timings. So that is very, very important, which has to be done. Thank you. थैंक यू सर. तो हम टाइप 1 डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं कि आज सुबह बात हुई कि ऑलमोस्ट 100 मिलियन लोगों को हिंदुस्तान में डायबिटीज़ है. तो टाइप 1 डायबिटीज़ कम होती है. अगर टाइप 1 डायबिटीज़ 95 to 93% जो डायबिटिक्स हैं उनको होती है, तो अगर 100 मिलियन भी डायबिटिक हैं तो कम से कम 5 लाख तो ऐसे लोग हैं हमारे देश में जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है और जिनको दिन में 4 बार 5 बार इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं. क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़, जैसा कि डॉक्टर मुदित ने बताया, ऐसी डायबिटीज़ है जिसमें शरीर में इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं बनती. टाइप 2 डायबिटीज़ में गोली खा के काम चल जाता है, एक्सरसाइज करके, खाना कम करके आदमी डायबिटीज़ की बीमारी को भगा भी सकता है. लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ का कोई भी इलाज नहीं है. अगर बच्चा कुछ भी खाता है तो उसको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना आवश्यक है. अगर वो इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं लगाता तो उसकी शुगर बढ़ती है और उसको तरह तरह की आगे जाके कॉम्प्लिकेशन होती हैं. इसी की वजह से इतनी सारी परेशानियां होती हैं. तो टाइप 1 डायबिटीज़ में बच्चों का ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम बड़ी उम्र में होते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं कि हमें बीमारी है, हमें ये ध्यान रखना है, हमें ये खाना है, हमें ये नहीं खाना. और बच्चों को खाना भी आवश्यक है क्योंकि उनकी ग्रोथ होनी चाहिए. तो इसलिए ये बीमारी बहुत ख़ास है और इसके लिए हर बच्चे को हमारे देश में इंसुलिन चाहिए, जिसको टाइप 1 डायबिटीज़ है, समय पे चाहिए, सही प्रकार के इंसुलिन चाहिए और सही मात्रा में चाहिए. राजपाल जी, डॉक्टर राजपाल सर, सो डू यू फील कि every child should have a right to insulin in India?
हर बच्चे को मिलनी चाहिए? Dr. Kesri, because there is no reason, whatever challenges we have resources as well. चाहे government setup है, चाहे corporate setup है, और the industry as well. So इसमें कोई मतलब भूति नहीं है कि नहीं होनी चाहिए. चाहे yes, insulin can be taken by syringes or pens or even pump. We as a country, we have resources as well. Yes, there can be a gap, but if healthcare professionals चाहें, government policy makers, insulin तो it's something definite, this is not non-negotiable. And NGOs are there, Illness to Wellness Foundation is there. We all can collectively make it like a right. Mr. Rajput मेरी बात सुन रहे होंगे, because कोई भी ऐसा डायबिटिक बच्चा किसी भी प्रांत में हो, कहीं भी हो, लेकिन उसको इंसुलिन देना, मैं कहता हूँ, इंडस्ट्री लीडर एज वेल, इट बिकम्स आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल. तो जी मंदिर में जाना हो या कहीं जाना हो, जी अच्छा कर्म है जी. Can I take this opportunity to request Ipsomed to provide free insulin to some children and perhaps few pumps also, because you're manufacturing that? मैं यहाँ पर whatever I say I deliver. मैं कहता हूँ जी, अगर some of the children who needs insulin, because we already have कुछ बच्चे, because we get a insulin, we buy insulin from a pharma company at a very good rate. Very good price, sir. जो MRP पे आती है, we get a very good price insulin. So we are very thankful to Dr. Sanjay Rajpal from Ipsomed, and thank you. Big round of applause for him. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. So now अभी हमने बात की टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चों को दिन में 4 बार 5 बार इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं. इंजेक्शन लगाने के लिए डोज समझनी पड़ती है कि अब कितनी लगाएं, कितने यूनिट लगाएं, 2, 4, 5, 10. तो उसके लिए शुगर चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ब्लाइंडली नहीं लगा सकते. जैसे किसी को बीमारी है तो शुगर की लोग गोली खाते हैं 1 mg की, 2 mg की, 500 mg की. बट टाइप 1 डायबिटीज़ में ख़ास बात यह है कि जो खाना खा रहे हैं उस पर निर्भर करता है कितनी इंसुलिन लगाएं, किस समय कौन सी इंसुलिन लगाएं. तो इसके लिए उनको शुगर चेक करना बार बार बहुत ज़रूरी है. तो इसके लिए आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं, सेंसर्स हैं, ग्लूकोमीटर हैं. तो मैं सना जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें कुछ बताएं इसके बारे में, प्लीज़. थैंक यू डॉक्टर केसरी. हाय एवरीबडी. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली अगर हम टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में बात करें, क्योंकि वी आर डीलिंग विद किड्स एंड किड्स डू नॉट, इवन अडल्ट्स डू नॉट वांट टू बी pricked टाइम एंड अगेन. दैट्स वेयर वी सी द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी कम इनटू द पिक्चर. और हमने अभी तक बहुत बात करी प्रिवेंशन के ऊपर, हमने बात करी प्रिडिक्ट करने के बारे में, और अब मैं एक यहाँ पे आई वांट टू इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू विच इज़ द फ्यूचर of treatment of type 2 and type 1 diabetes, which is precision care. It's absolutely important. And CGM patches, other sensors play a huge role in giving us that precise information. और जब हमारे पास वो information होती है, तो हम predict भी कर सकते हैं. We have that technology that we can predict blood sugars, and therefore we can use that data to kind of give precision care. Type 1 diabetes in kids and CGM, it's a foundation, I would say at this point. Precision care का एक बहुत बड़ा foundation है, especially CGM patches. इस पे बहुत कुछ है बात करने के लिए, but in short, if I were to put it, what are the advantages और इसके क्या फ़ायदे हैं? So नंबर 1 फ़ायदा इसका है early pattern recognition. हम patterns देख सकते हैं. If the sugars are rising, we know through the CGM patch. If the sugar is rising, have I eaten something which is high in sugar? Have I been taking a lot of stress? या मैंने कुछ activity नहीं करी है जिसकी वजह से ये हो रहा है. So you can recognize that pattern and you can make that correction. So आप precisely आप पता कर सकते हैं what is it that's missing in your daily routine. Number 2 is personalized micro decisions. You can know exactly by doing what, how your body is reacting, how the glucose is being absorbed in your body, right? So that is important. Sometimes it may be something as small as walking, for 10 minutes, which will normalize your blood sugar. Or maybe just deep breathing, which will reduce your stress. So things like that. Number 3 is safety and stability.
I don't have either type 1 or type 2 diabetes, but when I used a CGM patch, I recognized patterns. मुझे ये पता चला कि रात के 3 बजे से लेके सुबह के 9 बजे तक my blood sugars were in the red. So what should I do to see that my blood sugars are not going, मुझे hypoglycemia ना हो जाए, और ये diabetes patients के साथ एक बहुत बड़ा risk रहता है. तो इसका हम देख सकते हैं कि कैसे हमारी sugars behave कर रही हैं. And lastly, it empowers us. You know, as people who are living with diabetes or people who are not living with diabetes, to know how your body is behaving to different external factors, even the medication that you're taking, it helps you make better choices, right? It gives you that information, and now your doctor is more, empowered to know कि क्या चल रहा है, time range क्या चल रहा है आपके CGM patch के data का, and things like that. So it is indeed very, very important, Dr. Keshri. Thank you so much for that very insightful answer. We have had discussion about type 1 diabetes. This is a huge problem in our country. The numbers are big. The children affected are deeply affected with this, and not only the children, but the whole society and the community is affected by this. So, just in brief, sir, General Bansal sir, so what is the social and impact of type 1 diabetes in the families, in the communities? क्या क्या होता है type 1 diabetes अगर किसी के परिवार में हो जाए, or if anyone else would also like to? You have asked this about the family as well as the society. When we talk about the family has to arrange for the children specifically frequent injections, which is regularly given, monitoring the blood sugar. Secondly, there will be extra burden of economies. Everybody is may not be able to afford it also. So the family, secondly, there is a kind of apprehension all the time, specifically in the family and parents, in case of children, that they may go into hypoglycemia. The hypoglycemia is a very, very risky thing. Means if the child is in school, playing, doing some exercise, has not taken snacks or food on time, then there will be a problem, how he may fall down, or everybody, once the hypoglycemia is there, so one just have so many things. I mean, hypoglycemia can cause the hypoglycemic coma also. And when school is not geared up, or they do not have facilities, they do not have trained manpower to handle such a situation or to manage it. So it is very, very important that the school teachers, staff is to be given that training. Thirdly, as I told, the stigma with the child who is having diabetes, the other children, they may isolate him. So that is also to be taken care of. As far as the society in general is concerned, as here also there's so many societies, NGOs, they must make arrangement, or at the government level also, the people who cannot afford the children, when we talk about the midday meal, etc., so there should be a kind of thing that yes, along with midday meal or some kind of provision should be there. That if some children, they need this facility, it should be provided. So there are the challenges, and one has to find a way ahead. So that is very, very important. Yes, thank you, sir. If you permit me, sir, जो type 1 diabetic grown up हैं, उनकी शादी is a big challenge. Oh, because type 1, whether they are big cities, people have resources, पैसे भी हैं, पर वो कहते हैं कि राजपाल we have schools, we have everything, but can you get a non-diabetic for daughter-in-law or son-in-law for me? So this is another very stressful situation for the family as well. It is definitely very stressful situation for the family, because I personally see a lot of divorces in families with type 1 kids. And depression in mothers, as sir said, they are worried all the time about nocturnal hypoglycemia. They don't sleep at the night, check the sugars at night. But now let's move on to the other spectrum of diabetes. हम लोग पहले मानते थे कि डायबिटीज़ जो है बच्चों में नहीं होती, टाइप 1 डायबिटीज़ को छोड़ के डायबिटीज़ बड़ी उम्र में ही होती है. अभी भी हम मानते हैं कि डायबिटीज़ अब
यंग एज में होने लगी है तो भी 30-35 साल की उम्र के बाद होती है. बट दिस इज़ नॉट द फैक्ट. अब हम बच्चों का इलाज कर रहे हैं जो 10th क्लास में हैं, जिनका वज़न ज़्यादा है, उनको टाइप 2 डायबिटीज़ है और वो दवाइयाँ खा के उनका शुगर कंट्रोल हो रहा है. तो जो टाइप 2 डायबिटीज़ पहले बड़ी उम्र में होती थी, 50-60 साल की उम्र में होती थी, फिर 30-35 साल की उम्र में हम देखने लग गए. अब वही टाइप 2 डायबिटीज़ जो है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में होने लगी है और ऐसे केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं. हम में से जो डॉक्टर यहाँ पे बैठे हैं वो ज़रूर ऐसे बच्चों को देखते होंगे, उनका इलाज करते होंगे. तो इसकी सबसे बड़ी क्या वजह है सर? सबसे बड़ी वजह है sedentary lifestyle. The children, they are more busy with phone. They will not go outdoor. Secondly, earlier I can tell when I was a child in school, so we used to walk about 3, 4, 5, 6 kilometers going to school. These days, they don't walk, they don't do activity in the school also. And this screen time, this when they are busy on phone, they sleep very late. And once the sleeping is there, if they don't sleep properly, that is also one of the obesity, sedentary habits and food. The food is available abundant. One thing I would like to draw your attention, which is very, very important. In India, in our country, in past, there was famine, the food availability was less. So we had a thrifty gene. Thrifty gene means our genetic constitution is that we could preserve energy. With the small amount of energy, we could survive our ancestors. So now that that is why now these cases, we talk about the environmental factor, but genetic factor is also because of that. A study was done in US, and the study was done in US and asked by NAS. There, Indian who had the same lifestyle, whatever was in US, they born in the US, but because of genetic factor, the heart disease was 4 times common in Indian as compared to Americans or Caucasian over there. So it was a genetic factor, and this is one of the factor, and which we all know, the metabolic syndrome, this truncal obesity, and we have got the low HDL, which is the high density lipoprotein, protective and high triglyceride. There's a high blood pressure, the high the sugar. So they all contribute. So very important is that yes, first the diet of the children. There should be, parent must make efforts, cook healthy food, give to the children. Canteen should be stopped to serve any kind of food over there. They must, if they are allowed. Secondly, one thing has been harped here, that yes, our diet is 70%. Who is responsible for that? The policy should be made that diet is, though there may be vegetarian, that we should not only thrive on, say, wheat or on rice. This, the most rich food in the country is soybean. Why should we import soybean? We can have the soybean in our country. Now we are saying that the US is forcing us that those countries, they are having non-veg, but still they export soybean. So we must have soybean is the richest in the protein, is the 37%. 37%. Now, you may be aware, this millet was started. This was one of the programs that yes, millet should be included in diet. The millet has got a low glycemic index. So jawar, bajra, ragi, quinoa. Quinoa is very good for the vegetarian because it has all the essential amino acids. So this kind of policy is to be made. Decision has to be taken at the highest level, that rather than growing more wheat and rice, we must grow more soybean chunk, and should be part of everyday diet, whether in the soybean chunk or tofu or maybe in the flour also, in atta. I do that. I am a vegetarian, so I make sure that 40% of my flour is with the soybean only. So that is how one can have the low carbohydrate, good fat and high protein diet, which will serve the purpose as far as the diet is concerned, and everybody knows the importance of activity. These are the certain things one has to keep in mind while, if we really want to prevent diabetes in our country. Thank you, sir. Thank you. Dr. Kesri, may I add something?
Thank you. Thank you, sir, for adding all those points. We all must recognize the fact that diabetes, and I'm sure you all will agree with me, type 2 diabetes cannot be looked in isolation, right? With diabetes, you also have to look at high cholesterol, you have to look at obesity, you have to look at fatty liver, PCOS, insomnia, all these conditions which now fashionably are called lifestyle conditions, right? And when you have a lifestyle condition, the answer is simple. You got to change your lifestyle. And what are those things that you got to change? You have to sleep better. You have to reduce your stress by sleeping better. You have to eat the right kind of food that is good for you. Everybody's metabolic footprint is different. Number 3 is activity. There has to be some sort of activity. Dr. Mishra earlier spoke about different kinds of activities. I would highly, highly recommend everybody to do that. And the last but not the least is, another precision, which, and in nutrition, let me add, Sir spoke about protein, fat, and carbs. I would go a step further and say you need macro control, micro control, and biota. There are enough and more studies to prove that gut health and brain health is directly related. If you look after your gut, you will think better, you will sleep better, you will not be depressed. So these are a couple of things, and all this is possible. You can not only now prevent these lifestyle conditions, but you can also, in the years to come, look at reversing these conditions with the correct use of technology. And that's why we at Twin Health, we keep on stressing about precision care. You use that data and you empower the doctors, and they will give you precision care. The AI will tell you what exactly is the nutrition you need, what exactly is the activity, how much sleep do you need. All these things are pieces of a puzzle, and everybody in this world has a different puzzle which is unique to them. So that's all. Once you correct your dysfunctional metabolism by correcting all these things, I feel half the battle is won. So thank you so much for adding. So there's a very important thing which I think we should talk about, which has already been talked about in the inaugural function by Dr. Anup Mishra, Dr. Anuj Maheshwari sir. That is the obesity, the intra-abdominal fat. One of the root causes of this rising incidence of diabetes in our country and all over the world is excess of fat that we are having, excess of calories that we consume, and it actually goes inside our tummy and it settles there as fat, and this fat leaks out into the bloodstream. It causes a sort of fire inside our body, which we called inflammation. And ultimately this inflammation is destroying our pancreas. It's not making the insulin that it may be producing. You see, in type 2 diabetes, the irony is that ऐसा नहीं कि इंसुलिन नहीं बन रही, इंसुलिन ज़रूरत से बहुत ज़्यादा बन रही है, इतनी ज़्यादा बन रही है कि वो और काम कर रही है, वो फैट को मोबिलाइज कर रही है, हम और ज़्यादा, हमारा वजन और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमारी शुगर कम नहीं हो रही. So this insulin resistance is at core of type 2 diabetes. It is leading to inflammation. It is leading to all these things that Sanaji has just talked about, like PCOS, many other problems. Even depression is linked to inflammation. And that is one of the things which we have to control, which we have to look after. And the root cause of that is excess weight. हमें वज़न पे कंट्रोल करना है, उसके लिए जो भी कर सकते हैं सब करना है. डाइट न्यूट्रिशियस होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जिसमें कैलोरी कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो, जैसे सर ने अभी बात की. फिज़िकल एक्टिविटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. आजकल बच्चे मोबाइल ज़्यादा देखते हैं, मोबाइल पे ज़्यादा खेलते हैं और ग्राउंड में कम खेलते हैं. तो हाथ पाँव की मांसपेशियाँ शरीर की काम नहीं करती, क्योंकि जब मांसपेशियाँ काम करती हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, वही इंसुलिन ज़्यादा और बेहतर काम करती है. सो आई थिंक इन कंक्लूजन these are some things that we have discussed. We have discussed type 1 diabetes, we have discussed type 2 diabetes in young children, and because we are running short of time already, I would conclude this session and we can take this questions.
question is the rise in consumption of processed foods and sugary. It's increasing. And the question is the real juice, 100% orange, the natural, farm fresh, the misleading information on packaged foods is misguiding the kids. The recent this is going on. The fight is going on between FSAs, the court, and the bodies. The Kisan ketchup, fresh tomatoes. Where is the fresh? The Oreo, the cream is there. That is a vegetable oil, and there are a number of other products. The real juice, that is not the real. 100% or fruit juice, that is not the 100%. These all misleading information is going on. So, sir, going on. without naming any companies, I think Sanaji has already mentioned that, and every one of the panelists agrees with you that we should look into child nutrition. We should look into what is being provided in the canteens, what they're consuming in their schools, and less of sugary drinks and juices. That definitely is a good idea. So I think we can conclude the session. Thank you everyone for your precious time. For being such a wonderful moderator, and thank you all for such insightful discussion on safeguarding our children's future. May I now request Mr. Anil Rajput sir to come on the stage and present the mementos to all our esteemed panelists. I now request Dr. Anil Rajput sir to present the memento to Dr. Kesri, please. Dr. Mudit Sabharwal. Dr. Mudit Sabharwal. I now request Anil Rajput sir to present the memento to Ms. Sana Khan. We are now presenting the memento to Major General J.K. Bansal sir. I request Anil sir to present the memento to Dr. Sanjay Rajpal. Thank you everyone. Please give them a huge round of applause. In session, the second session will talk about diabetes in women across life stages. I request our esteemed moderator, Dr. Shalini Jaggi, Chairman RSSDI Tele Chapter and Consultant Diabetologist and Director Life Care Diabetes Center, to please come up on the stage and please take your seat, ma'am. Please give her a huge round of applause. So this session will focus on the unique challenges women face, from the impact of hormonal health on glucose control to the management of gestational diabetes, post-pregnancy care, effects during menopause, and the link between PCOS and diabetes risk. We will also touch upon the importance of mental health and preventive care. I now request our esteemed speakers, Dr. Picky Saxena, Director, Professor and in charge of Assisted Reproductive Services, Department of Obstetrics and Gynecology, Lady Hardinge Medical College in SSKH, New Delhi, to come up on the stage. Please give her a huge round of applause. Next, we have Dr. Himsweta Srivastava, Director, Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, University College of Medical Sciences and Guru Tegh Bahadur Hospital. Please give her a huge round of applause. Next, we have Dr. Kamna Datta, Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, ABVIMS and Dr. RML Hospital, New Delhi.
Next, we have Dr. Himka Chawla, Senior Consultant, Endocrinology and Diabetology, PSRI Hospital. Let's give her a huge round of applause. And last but not the least, Dr. Richa Chaturvedi, Senior Endocrinologist, Indraprastha Apollo Hospitals. Ma'am, can we have on the... I now request Dr. Shalini Jaggi to please lead the discussion. Ma'am, the stage is yours. So, a very good morning to everyone, and many thanks to Shri Anil Rajput ji for having all of us here. This is a great initiative, and I think every World Diabetes Day we talk about prevention of diabetes, we do a lot of activities, we do screening camps, but how much are we succeeding is a very important question we need to ask ourselves. बिकॉज हो क्या रहा है ना कि जब जब फिगर्स रिलीज होते हैं, हर साल जब हमें पता चलता है अरे डायबिटीज़ इतना है, अगले साल पता चलता है थोड़ा सा और बढ़ गया, थोड़ा सा और बढ़ गया, तो हम तो कैंप्स भी कर रहे हैं, हम तो स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं, हम तो अवेयरनेस भी कर रहे हैं, एवरी अदर कॉरपोरेट में हम हेल्थ अवेयरनेस करते हैं, हम डायबिटीज़ अवेयरनेस करते हैं, दवाइयाँ इतनी सारी आ गई हैं, यू नो वी टॉकिंग अबाउट मेडिसिन जो अब सिर्फ शुगर कंट्रोल नहीं करते लेकिन हमारे ऑर्गन्स को भी बचाते हैं, है ना. हम स्कूल्स में भी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, हम कॉलेजेस में भी बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, लेकिन आप देखो तो आसपास मोटापा तो बढ़ रहा है, ओबेसिटी तो बढ़ रही है. एक चेंज जो अभी आया है, अब पार्क में चलते हुए लोग ज़्यादा दिखते हैं. अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं, हम में से कितने लोग वॉक करते थे, जाते थे, कभी कभी डॉक्टर्स शायद थोड़ा सा अवेयर ज़्यादा हैं तो शायद थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा डालते थे, लेकिन ओवरऑल अगर एक जनरल पब्लिक की बात करें तो शायद हमारे एक्टिविटी लेवल्स इम्प्रूव हो रहे हैं, हम समझ रहे हैं खाने के लिए क्या हेल्दी है क्या अनहेल्दी है. वी आर मेकिंग दोज इन्फॉर्म्ड चॉइसेस टुडे. कमिंग बैक टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डायबिटीज़ इन विमेन, थैंक यू अनिल जी, आपने ये टॉपिक रखा इस डिस्कशन के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों को लगेगा ये विमेन का टॉपिक है और सारी विमेन यहाँ पर बैठी हैं, ऐसा क्या कारण है कि विमेन पे एक स्पेसिफिक टॉपिक रखा गया डिस्कशन के लिए. तो आप लोगों को बहुत ये जानकर बड़ी सरप्राइज होंगे आप लोग कि अगर हम डायबिटीज़ इन मेन वर्सेस डायबिटीज़ इन विमेन की बात करें, आप जानते हैं कि कितने यू नो मेन वर्सेस विमेन किसको ज़्यादा डायबिटीज़ होती है? एनीबडी? डू मेन गेट मोर डायबिटीज़ और डू विमेन गेट मोर डायबिटीज़? एनीवन, एनी वाइल्ड गेस? ज़्यादा आदमी को डायबिटीज़ होती है या ज़्यादा औरतों को होती है? द फिगर्स शो कि अगर हम 2019 की बात करें तो देयर वर मोर मेन हैविंग डायबिटीज़ दैन विमेन. जैसे जैसे डायबिटीज़ का बर्डन बढ़ रहा है, द विमेन आर फास्ट कैचिंग अप, और इसके बहुत सारे कारण हैं. दूसरी चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट जो हम मिस कर देते हैं कि जो डायबिटीज़ की हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं, मोर विमेन हैव वेरी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ दैन मेन. तो मेन में जो डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं वर्सेस विमेन में जो डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लोगों को लगता है हार्ट अटैक तो आदमियों को होता है. अगर एक वुमन को चेस्ट पेन होता है तो हम क्या बोलते हैं? घबराहट हो रही है, मीनोपॉजल है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है. लेकिन द फैक्ट इज हार्ट डिजीज इज मोर प्रेवलेंट एंड मोर सीरियस इन विमेन दैन मेन. तो आई थिंक दिस इज वाई वी नीड टू फोकस ऑन विमेन्स हेल्थ. लाइफ साइकिल ऑफ अ वुमन इज़ वेरी डिफरेंट, क्योंकि हमारे बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल हार्मोन चेंजेस हैं, राइट फ्रॉम अडोलेसेंस, you know, to you achieve puberty, you become pregnant, you are in the reproductive age group, post pregnancy weight gain, और फिर मीनोपॉज आ जाता है, और मीनोपॉज के साथ उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. तो सबसे पहले डॉक्टर रिचा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब हम हार्मोनल शिफ्ट्स की बात करते हैं एक लड़की के लाइफ साइकिल में, उसके पैदा होने से लेकर जब तक वो एक एल्डरली सीनियर सिटीजन बन जाती है, तो ये हार्मोनल चेंजेस का उसकी ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ पे, उसके डायबिटीज़ पे, उसके शुगर्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और इसकी सिवियरिटी क्या है? Thank you for that question, and it's a good starting point. So initially, if we look at puberty, that is the time when our growth hormones, sex steroids levels are rising, and these are
counter-regulatory hormones. That is, they oppose the action of insulin. So that is a time of temporary insulin resistance. So this is temporary, but if those children are having obesity or genetic risk, then even this temporary insulin resistance may be masked, and many a times we see type 2 diabetes becoming more common at the time of puberty. So that's a state of a little more insulin resistant, and that is also the time when we should be more particular about children following proper lifestyle modification, as a beginning of lifestyle changes, as a beginning of lifelong changes. Then menstruation also is a time of fluctuating insulin sensitivity. During the initial part of the follicular phase of the menstruation, there is little more, better insulin sensitivity because of estrogen dominant stage. But then later on, the luteal phase, what we call later part of the cycle, which is progesterone dominant, there is little more of insulin resistance. So these are the fluctuations that we see, and many a times, it is also associated with premenstrual symptoms, emotional eating, binge eating, and emotional changes. So for people with diabetes, for our children with diabetes, that may be a slightly delicate period for diabetes management. Then as women head towards menopause, it's a sort of less talked about phase, but it's a very important phase, and many a times that's a wake-up call for metabolic changes and for cardiovascular changes. That is a time when the protective effect of estrogen is taken off. That is why cardiovascular diseases, they become more common in menopause, because estrogen has sort of protective role as far as our lipid levels are concerned and heart is concerned. So menopause is also the time when there is little more of central obesity and leading to more insulin resistance and fluctuations in diabetes management. The same women who were sort of attaining good glycemic control may come to us with fluctuating sugar levels, and we may need to adjust the dosages, and we may need to adjust their lipid medication statins, because this is the time when cardiovascular risk starts increasing. So, there are many other things about menopause. I mean, that if we start talking about that, it'll take a long time, but I think that's something that needs our attention, and we should, start talking about it. Especially, you must have read in the news that FDA has lately, pulled off the boxed warnings on HRTs, on all those hormonal medications which are used as hormonal replacement therapy, because there was so much fear and scare about these medications, but which has started happening after Women's Health Initiative study. But now we have better evidence, and we have better we are in a better position to use HRT. So yes, all these phases are important as far as diabetes is concerned, as far as our hormonal therapy is concerned. Absolutely. So I think it is very important to understand that as the girl child grows up to transition into a young woman, and if she starts gaining weight, that is where the entire problem comes in. So right from adolescence to her reproductive age, then she gets pregnant. If she is already overweight, the risk of gestational diabetes comes in. Eventually, once she's completed her reproductive cycle, menopause again increases insulin resistance. So the entire life cycle of a woman, there are different phases where she is more vulnerable. So Dr. Himika, I want to ask you, any particular phases of the woman's life cycle where she is more vulnerable to all this insulin resistance and its impact on her overall health? So I think partly it has already been taken up by Dr. Richa, and she's explained how the different hormonal changes that we go through affect the basically the glucose balance and the insulin sensitivity in our body. So I would say tracking through the life cycle, again, these are the three most important time points where women are most vulnerable to having a disbalance of their blood glucose control. So of course puberty is important. We also notice not only the new onset diabetes that we are seeing in young adolescent, a bit overweight, obese girls now, we also routinely see that even in patients with type 1 diabetes that we are treating, they have fluctuations and they have worsening of their blood glucose control around the puberty period because of these hormones worsening the insulin resistance. Very important then is the gestational diabetes, when the woman is particularly vulnerable, particularly in the late second trimester and the early
third trimester. You have effect of the placental hormones, the placental lactogen, the progesterone. They cause a worsening of the insulin resistance again. So there can be diabetes or a hyperglycemia that comes through this phase, which can actually go away once the woman has delivered. But this gestational diabetes is very important because it's a very important future marker of developing not only diabetes, not only in the next 5 years, the risk even persists for the next 30 to 35 years, and along with that, additional risk of cardiovascular disorders and the entire metabolic spectrum that follows. And finally, as ma'am talked about, the menopausal phase, where you do have fat accumulation starting particularly in the abdominal area. You gain inches, you have increase in the visceral adiposity, there's worsening insulin resistance. There's also an imbalance that's created between the estrogen, declining estrogen, and the similar androgen. A basal level of androgen or male hormone is something which is present in all the females. It's only at the time of menopause that the balance sort of gets disturbed. Along with that, there is a declining muscle mass, our protein metabolism changes, the way we absorb our amino acids changes, and we've never really emphasized on the importance of strength training in addition to just the aerobic activity. So the loss of muscle mass and bone mass that happens around this period again makes women vulnerable to the blood glucose disturbances. So I think these are the important time points that we need to look into. Absolutely. So I think जैसे जैसे एक वुमन की लाइफ साइकिल में उसके हार्मोन्स चेंज होते हैं, वैसे वैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, वेट बढ़ता है. तो बैकग्राउंड में जब हमारा एनवायरनमेंट, डाइट, ये सब चीज़ें ऐड ऑन होती हैं, तो आई थिंक इंसुलिन रेजिस्टेंस वेरी होने के वजह से डायबिटीज़ कंट्रोल, मेटाबॉलिक प्रोफाइल सब बिगड़ जाता है. अभी हम लोगों ने बात की कि प्रेगनेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड अनफॉर्चुनेटली इंडिया में मोस्ट ऑफ द प्रेगनेंसीज आर अनप्लान्ड. सडनली आपकी एक पेशेंट जो डायबिटिक है आपके पास एक दिन आती है और बोलती है कि मैम मैंने कंसीव कर लिया है, कोई प्लान नहीं था, लेकिन अब कंसीव कर लिया है. मे बी शी इज़ टेकिंग टैबलेट्स, मे बी हर शुगर लेवल्स आर नॉट ऑन कंट्रोल व्हेन शी इज़ प्रेग्नेंट, तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. तो यहाँ इंपॉर्टेंस है प्री कंसेप्शन काउंसलिंग की, जो आज हम बहुत स्ट्रेस दे के बात करते हैं कि अपनी हर यंग गर्ल, यंग वुमन जो आपके सामने बैठी है, चाहे वो अपनी फैमिली कंप्लीट कर चुकी है बट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, तो उससे बात करनी बहुत ज़रूरी है कि एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी विद अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा टाइम बॉम्ब है. तो यहाँ मैं डॉक्टर हिमश्वेता से पूछना चाहूँगी कि प्री कंसेप्शन काउंसलिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है और इसके इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या है, अगर आप ब्रीफली हमें बता सके. क्या क्या हमें अपने एक यंग पेशेंट को ज़रूर बताकर रखना चाहिए. Importance of glycemic control, importance of blood pressure control before she gets pregnant. Actually, preconception counseling is a very, very, very important and pertinent issue, and I am very thankful that this has been brought and we are giving time to this, because mostly, I think 90% in India, pregnancies are unplanned, or if they are planned also, no counseling is done or taken. The only counseling is the couples decide we have to get women wants to get pregnant. But there is no medical counseling as such. This part is very, very lacking in our setup or Indian scenario. But it is very, very important. Because if a patient is diabetic or the major components are about all the chronic conditions, whether the woman is fit to get pregnant, her nutritionally, is she balanced, or mentally also, is she free from stress? After her marriage, maybe she's not able to adjust, maybe she's having a lot of stressful or mental issues, or she's having normal menstrual cycles or not. Maybe she's bleeding a lot, she's having polycystic ovaries, or she's very obese with having unbalanced diet and binge eating with coping with her stress, and now suddenly she finds that she has to cope with her pregnancy also. So pre-conceptional counseling, the important components are that whenever she comes to for advice, this counseling can be given even by an obstetrician or a general family physician also. This is very, very important. We don't need a specialized obstetrician only to give. And in the components will be, first we have to take the medical history of the female, whether she's on any medications, or she had any past history or family history of any chronic illnesses in her father, in her siblings, or her parents or grandparents, and whether she is having any illness or not.
And if you find that she has a history of diabetes in her family, or a sibling, or hypertension, then we have to screen this patient whether she is optimized with her sugar values or not. Most of the patients, they go into the pregnancy without even knowing that they are pre-diabetic or pre-gestational diabetes also. In fact, type 2 diabetes also, they are discovered when they get their routine checkup during pregnancy. So we have to screen them for all these chronic diseases. Then we have to ask them for any infection diseases, and about their vaccination status, whether they are properly vaccinated for starting the pregnancy. Any infectious disease, rubella vaccine or varicella, or for that matter tetanus, Tdap, etc. they have already immunized or not, because that can have a bearing on their current pregnancy. Then we have to also talk about their nutritional status and nutritional assessment. That is done by taking their, what are their diet they are taking, the hemoglobin, they are maintaining normal hemoglobin, normal weight or not, is she underweight or is she obese. Obesity has a very serious concerns over the pregnancy outcomes, as well as the being underweight. In fact, in the Indian government is running certain programs for like Anemia Mukt Bharat. This is for catching the young adolescent girls to make them free from anemia, because these are the population that will go pregnant now within 5-10 years. So we will have and we have a very huge burden of anemia with pregnancy. They come with pregnancy and then they are detected as having 6 grams, 7 grams. So these are all the components that are encompassed in the preconceptional counseling, so that we make the patient fit. If she is diabetic, she should be HbA1c less than 6.5. At least 6. If she is having blood pressure, blood pressure should be controlled, and end organs should have been assessed. Even with diabetes, end organs should have been assessed, renal disease, cardiac health, as well as lipid profiles. So these are all the components. Absolutely. So I think बात बहुत important समझने की यहाँ पर ये है कि अगर कोई भी लेडी ऑलरेडी ओबीज़ है या ओवरवेट है या उसे डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है या किसी भी तरह से हमें लगता है कि एज मोर देन 25 तो आजकल हम लोग पढ़ लिख रहे हैं, प्रोफेशनल हैं, शादी बहुत लेट एज में होती है, फिर कंसेप्शन और लेट एज में होती है, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं. तो जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, द प्रॉब्लम इज़ अगर अर्ली प्रेगनेंसी में शुगर्स कंट्रोल में नहीं है, जैसे मैम ने कहा HbA1c 6.5 के बीच में होना चाहिए प्रेगनेंसी से पहले. इसका एक मेन इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि अर्ली प्रेगनेंसी में अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो बच्चे के ऑर्गन्स पे असर पड़ेगा. न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, कार्डियक अनोमलीज, सडन इंट्रायूट्राइन डेथ, हार्ट बीट नहीं आती. कई बार हम बोलते हैं ना, लेडीज़ हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि जी मेरे पिछले प्रेगनेंसी में बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई तो 6-7वें हफ्ते तक मुझे अबॉर्ट करना पड़ा या स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हुआ. तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड थायराइड, इन सब चीज़ों के बहुत बड़े इम्प्लीकेशंस हैं. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एनी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वुमन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, वी मस्ट हैव दिस कॉन्वर्सेशन. डायबिटीज़ की जो दवाइयाँ हैं वो हम प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते. तो डायबिटीज़ अगर हो जाती है तो प्रेगनेंसी में हमें रादर कंसीव करने से पहले ही मैक्सिमम दवाइयाँ बंद करके हमें उसे इंसुलिन पर कन्वर्ट कर देना चाहिए, बिकॉज इंसुलिन प्लासेंटा क्रॉस नहीं करेगा तो बेबी की बॉडी में नहीं जाएगा, हार्म नहीं करेगा. दवाइयाँ जितनी भी हैं प्लासेंटा क्रॉस करेंगी, बेबी की बॉडी में जाके हार्म कर सकती हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं प्री कंसेप्शन के जो हम सबको मालूम होने चाहिए. जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में अगर बात करें, डॉक्टर पिक्की आप भी डिप्सी में बहुत काम करती हैं हमारे साथ जेस्टेशनल डायबिटीज़ में, तो बहुत शॉर्टली सिंपल लैंग्वेज में आप बताइए जेस्टेशनल डायबिटीज़ एग्जैक्टली क्या है और एक माँ के लिए और उसके बच्चे के लिए इसके इम्प्लीकेशंस क्या है. हम क्यों बात कर रहे हैं कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी हमें मैनेज करना है और बहुत अच्छे से मैनेज करना है. इंट्रायूट्राइन प्रोग्रामिंग क्या होती है, ट्रांस जेनरेशनल NCDs स्प्रेड क्या होता है. तो अभी जैसा कि बात हुई, जैसा कि अभी हमने बातचीत की, प्री कंसेप्शनली हमें सब कुछ मेटाबॉलिकली ऑप्टिमाइज़ करना है बिफोर द वुमन बिकम्स प्रेग्नेंट. उसके लिए बहुत ज़रूरी है कॉन्ट्रासेप्शन भी. टिल द टाइम उसका हीमोग्लोबिन, उसका ब्लड प्रेशर, उसका ब्लड शुगर और लिपिड प्रोफाइल और वेट, ये 5 चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी हैं.
और अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग, आई बिलीव इन अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग, क्योंकि जैसा कि अभी हम लोगों ने बातचीत की कि कोई शादी से पहले या प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले नहीं आता ये सब ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, तो हमारे बहुत सारे पेशेंट्स इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रहे हैं, PCOS से सफ़र कर रहे हैं, तो वो प्रेग्नेंट होने के इलाज के लिए हमारे पास आते हैं या ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स के लिए आते हैं। तो उसी समय हमें हर एक पेशेंट का हाइट, वेट, BMI, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर ज़रूर और वेस्ट हिप रेशियो, जैसा कि सुबह बातचीत हुई, सिर्फ शुगर सेंट्रिक नहीं, ग्लूकोसेंट्रिक नहीं, वी ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन द ओबिसिटी पार्ट, ऑन द लिपिड पार्ट एंड ऑन स्ट्रेंथनिंग. So all these things need to be taken care of before the woman becomes pregnant. ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनोजेनेसिस है, बच्चे के जो ऑर्गन्स हैं वो नियरली 8 to 9 वीक्स तक ऑर्गेनोजेनेसिस इज completed. So by the time the woman will present to us with her missed periods and UPT, urine pregnancy test is positive, half of the harm is already done. तो ऐसा है कि जो हमारे बेबीज़ हैं, जो इंट्रायूट्राइन प्रोग्रामिंग है, वो बच्चे के जो पैनक्रियाज हैं वो अबाउट 10 to 11 वीक्स पे डेवलप होने शुरू हो जाते हैं. इंसुलिन सबसे पहले 4 वीक्स पे देखा जाता है. तो बहुत ज़रूरी है कि पेरी कंसेप्शनल ग्लूकोज कंट्रोल और ये मेटाबॉलिक, हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, शुगर, लिपिड प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें उस समय ऑप्टिमाइज्ड हों. क्योंकि अगर ये सब चीज़ें ऑप्टिमाइज नहीं हैं और मदर का ब्लड शुगर अगर उस समय हाई है तो वो प्लेसेंटा के थ्रू बेबी के अंदर जाके उसके जो पैनक्रियाज हैं उनको भी डिसफंक्शन करता है. और अगर हम बाद में ब्लड शुगर कंट्रोल कर भी लें तो भी बेबी के अंदर जो ये इंट्रायूट्राइन प्रोग्रामिंग है वो ऑलरेडी हो गई होती है. और ये है कि प्री जेस्टेशनल डायबिटीज़ और जेस्टेशनल डायबिटीज़ में ये फ़र्क है कि प्री जेस्टेशनल डायबिटीज़ मीन्स क्रॉनिक बीटा सेल डिसफंक्शन पहले से है और उसकी शुगर पहले से ख़राब है. लेकिन प्रेगनेंसी में जो हमारा प्लेसेंटा है दैट इज़ सेक्रीटिंग सम ग्लूकोजेनिक हार्मोन्स विच पीक एट अबाउट 24 वीक्स. तो उस समय अगर हम डिटेक्ट करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो भी मदर को डायबिटीज़ है वो पकड़ा जाएगा. लेकिन अभी जो मैंने बात की इंट्रायूट्राइन प्रोग्रामिंग की, 8 to 10 वीक्स पे ही अगर हम उसे पकड़ पाएँ और कंट्रोल कर पाएँ तो हम नेक्स्ट जनरेशन मतलब कि बेबी को अफेक्ट होने से बचा सकते हैं. और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि अबॉर्शंस, कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशंस, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, बिग बेबीज़, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी, इन्फेक्शंस और मैक्रोसोमिया, सिजेरियन डिलीवरीज और आगे चल के बच्चे को डायबिटीज़ होने का खतरा, चाइल्डहुड ओबेसिटी, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, ओबेसिटी, कार्डियोवास्कुलर रिस्क, ये सारी चीज़ें भी बच सकती हैं. तो यहाँ समझने की बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि डायबिटीज़ चाहे प्रेगनेंसी से पहले हो या प्रेगनेंसी के दौरान डिटेक्ट हो, दोनों सूरत में मदर की हेल्थ और बेबी की हेल्थ को इम्पैक्ट करती है. प्री जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी कि प्रेगनेंसी से पहले ही डायबिटीज़ थी, जहां हम कहते हैं कि प्री कंसेप्शन काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी से पहले आपने सारा मेटाबॉलिक प्रोफाइल सेटल कर दिया सो दैट रिस्क ऑफ एडवर्स कॉम्प्लिकेशंस कम हो गया. जेस्टेशनल डायबिटीज़ कई बार क्या होता है, शुरू में डायबिटीज़ नहीं है, मे बी द लेडी इज़ ओबीज, एज इज़ मोर, रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर में उसकी शुगर बढ़नी शुरू हुई. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ठीक थी, सेकेंड ट्राइमेस्टर में मे बी थोड़ी बढ़ी या थर्ड ट्राइमेस्टर में बढ़ी, जो हम टिपिकल जेस्टेशनल डायबिटीज़ की बात करते हैं. अर्ली GDM तो था जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमने बात की. अब जो हम टिपिकल जेस्टेशनल डायबिटीज़ है वहाँ भी अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में या थर्ड ट्राइमेस्टर में भी अगर शुगर बढ़ती है तो अगेन रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाता है. मैक्रोसोमिया, पॉलीहाइड्रैमनियोस, प्रीमैच्योर डिलीवरी, ये सब कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं. और मदर को अगर डायबिटीज़ है और बेबी के प्लेसेंटा के थ्रू जब बेबी ने भी परसीव कर लिया कि शुगर हाई है, और जैसे मैम ने कहा बेबी के पैनक्रियाज ऑलरेडी फंक्शनल हैं, तो बेबी के पैनक्रियाज को भी अभी से इंसुलिन बनाना पड़ेगा. बनाना तो उसे कब था, पैदा होने के बाद. लेकिन अब क्योंकि मम्मी की शुगर बढ़ी, प्लेसेंटा के थ्रू शुगर आई, बच्चे के पैनक्रियाज ने सेंस किया कि शुगर बढ़ी हुई है, तो उसने भी काम करना शुरू किया. तो अब होगा क्या, जब ये बच्चा पैदा होगा तो ऑलरेडी उसको संस्कार दे दिया ना डायबिटीज़ का. तो यही वो बच्चे होते हैं जो बड़े होने के बाद अगर मोटे हो जाते हैं, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, खाना पीना गड़बड़ है, तो इन्हीं बच्चों में डायबिटीज़, NCDs,
बीपी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है। तो 2 जनरेशंस इंपैक्ट हो रही है जेस्टेशनल डायबिटीज से। माँ भी, क्योंकि माँ को जेस्टेशनल डायबिटीज हुई तो फ्यूचर में डिलीवरी के बाद उसका भी रिस्क बढ़ गया डायबिटीज का, और बच्चा भी, क्योंकि वो तो संस्कार ही डायबिटीज का लेके पैदा हो रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि फॉर अ वुमन it is very important right from preconception to post conception to manage her metabolic profile well. अब यहाँ हम बात करते हैं डॉक्टर कामना, एक चीज़ और डॉक्टर शालिनी, जो हमारे आजकल PCOS वाले बच्चे हैं, जो हमारे पास जल्दी जिनके पीरियड्स, बच्चों के बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि 9 और 10 इयर्स पे उनके पीरियड्स शुरू हो रहे हैं और वो ओबीज हैं और उनके चेहरे पे बाल ज़्यादा हैं, रेगुलर साइकिल्स हैं, बहुत हैवी ब्लीडिंग है, क्योंकि सुबह से हम सुन रहे हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जंक फूड, स्ट्रेस, मोबाइल पे देखते रहना, एक्सरसाइज ना होना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये PCOS मीन्स प्री डायबिटिक स्टेट। और बहुत ज़रूरी है कि कोई भी ऐसी बच्ची जब हमारे पास आती है उसको लाइफस्टाइल चेंजेस, सोना अच्छे से, खाना घर का खाना, और जो हमने सुबह से बात की वो चीज़ें अभी ही कंट्रोल करनी है, क्योंकि बाय द टाइम दिस इज़ ऑलरेडी अ प्री डायबिटिक कंडीशन एंड देयर इज़ अबाउट 20 to 30% beta cell dysfunction which has already occurred. So once she enters into pregnancy, she's got very, very high risk to develop GDM and very high blood sugars and all the feto-maternal complications. तो प्रेगनेंसी से पहले ही इन बच्चों को पकड़ना है और इनको ये सब प्रॉब्लम्स होने से, इनफर्टिलिटी होने से बचाना है। डॉक्टर कामना, बहुत ब्रीफली मैं आपसे पूछना चाहूँगी, पोस्ट प्रेगनेंसी एक लेडी को GDM हुआ, आपने उसे थ्रू आउट प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से गाइड कर दिया क्या करना है, उसने आपकी सारी बात मानी, उसने खाना पीना कंट्रोल कर लिया, उसने शुगर्स को कंट्रोल कर ली, डिलीवरी हुई, बेबी के साथ बिजी हो गए, है ना। तो अब ना हमने एक्सरसाइज की, वजन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। तो पोस्ट प्रेगनेंसी में भी आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, बहुत ब्रीफली बताइए बिफोर वी कंक्लूड। Yeah, so the problem, the care after post-pregnancy begins right after delivery. बच्चा आ गया तो सारी फैमिली बच्चे में बिजी होगी, ऐसे नहीं करना। लेडी अलग, बेबी अलग, दोनों कैरी कर रहे हैं लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क। ये मदर को जानना भी बहुत ज़रूरी है, एंटायर फैमिली को जानना बहुत ज़रूरी है। सो अवेयरनेस इज़ द फर्स्ट थिंग। व्हाट should we be aware of? That this lady who had diabetes during pregnancy has a 10-fold risk of developing diabetes in future. माने कि 10 times risk ज़्यादा होता है इन लेडीज़ को डायबिटीज़ होने का coming 20 years में। Almost half of these women who had diabetes during pregnancy will develop diabetes in the coming 20 years. तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है जो हम देख रहे हैं। तो करना क्या है? प्रॉब्लम्स तो हम बड़ी हाईलाइट कर रहे हैं सुबह से, करना क्या है इसके लिए? करने के लिए वही बेसिक चीज़ें हैं, एक्सरसाइज, जिसका मतलब आधा घंटा डेली वॉक, एंड दिस डेली वॉक इट इज़ as difficult as easily I am saying, so it becomes the responsibility of the family, the whole family, and I can see a lot of men, women, everyone sitting here. It's a responsibility of all of us to encourage each other to walk for at least 30 minutes a day. 150 मिनट एक हफ्ते में वॉक करनी है, 2 दिन खाली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है. दिस विल हेल्प यू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डायबिटीज़ मल्टीपल टाइम्स, एंड नॉट जस्ट डायबिटीज़ का रिस्क, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का रिस्क हो जाता है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है, कैंसर का भी रिस्क बढ़ सकता है इन लेडीज़ को जिनको लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ रहती है, स्पेशली endometrial cancer, breast cancer, ovarian cancer, pancreatic cancer. So we should be aware of these things. जो बच्चा आ रहा है, ये बच्चे को भी रिस्क होता है, as already highlighted. So again, charity begins at home. So when we are done with the pregnancy, आगे unwanted pregnancies नहीं होनी है, उसके लिए proper precautions लेनी है. हमको अपना lifestyle modifications, which will include the diet as well as the exercise. बच्चों को एक्टिव शुरू से रखना है. Fat cells deposition occur in the first 7 years of life. So the early time is very important for the family to take care of the child. वो एक छोटा सा बस स्क्रीन टाइम आप चेक कर लीजिए. अपना ही स्क्रीन टाइम हम अगर चेक करेंगे तो 3 घंटे से ज़्यादा होता है, जबकि हम सोचते हैं हम बहुत बिजी हैं, हम फ़ोन नहीं देखते. आई एम वेयरिंग दिस बैंड जस्ट टू सी दैट हाउ मेनी स्टेप्स आई एम टेकिंग, एंड व्हेन आई एम जस्ट डूइंग ऑल माई डेली वर्क एंड आई थिंक आई एम क्वाइट अ बिजी गायनेकोलॉजिस्ट, इट्स ओनली 3000. सो अगर हम जनरली अपने आप को चेक नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा हम कितने बड़े गड्ढे में घुस रहे हैं. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. हमने बात कर ली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हमने बात कर ली अवेयरनेस, हमने बात करी एडोलेसेंस, प्रेगनेंसी, मीनोपॉज, मीनोपॉजल प्रॉब्लम, सब चीज़ों की. मेंटल हेल्थ,
बहुत important है. Dr. Himika, in just 1 or 2 lines, the importance of mental health throughout the woman's life stages. How does that impact the metabolic profile of a woman? See, I think the relation is bidirectional, and all kind of mental health disorders, be it anxiety, depression. So there is clear activation of the sympathetic nervous system, the hypothalamic pituitary axis. So chronic stress, anxiety, depressive disorders, they can increase the level of cortisol, our stress hormone, they can increase the level of adrenaline, noradrenaline. So all this again worsens the insulin resistance. So be it PCOD, be it gestational diabetes, be it the postpartum phase, so the entire journey and the entire glucose balance can be affected by the poor mental health. And not just mental health, sleep hygiene is something that we need to seriously look into, because not many people know that early catching on the early part of sleep is extremely important, particularly the first half from around 11 p.m. to 1 or 2 a.m. is a time where the insulin resistance, if you don't catch up on that sleep, the insulin resistance can go up to 50%. So we need to follow better sleep hygiene practices. And of course, women need to prioritize on their health and the mental well-being for, a comprehensive, better control of their diseases, particularly the metabolic health. Absolutely. So I think to conclude, one thing is very clear. Women have an equal and rather worse impact of diabetes compared to men. So it's important that we give them the due recognition and empower them with the right tools and knowledge on why managing their diabetes, why managing their mental health, their hormonal health, their metabolic profile is very, very important. तो एक adolescence में जब एक बच्चे को obesity होती है से लेके pregnancy से लेके post menopause तक, आप हमेशा एक हाई रडार अलर्ट पर रहते हैं, बिकॉज मेटाबॉलिक प्रोफाइल आपका इम्पैक्ट करेगा आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को. सो आई थिंक लाइफस्टाइल मेजर्स, कंट्रोलिंग योर वेट, मेंटल पीस, गुड स्लीप, स्टेइंग हैप्पी is very, very important. And a woman, if she is healthy, the entire family is healthy. Because the health starts from the kitchen, it starts from home. अगर एक माँ अपनी सेहत का ध्यान रखती है तो वो सारे परिवार को हेल्दी खाना खिलाएगी, सारे परिवार को हेल्दी करेगी. सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट हम अपनी हर फीमेल पेशेंट हो, कोलीग हो, फैमिली मेम्बर हो, उन्हें उनकी हेल्थ के लिए अवेयर करें. बचपन से लेके पोस्ट मीनोपॉजल एज ग्रुप तक वेट का ध्यान रखना, मेंटल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दी ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव वेलबींग. तभी हम बोल सकेंगे कि हम डायबिटीज़ प्रिवेंशन की तरफ कदम रख रहे हैं, नहीं तो हम सिर्फ स्क्रीनिंग और डिटेक्शन ही करते रह जाएंगे. थैंक यू सो मच. Thank you so much, Dr. Jaggi and the wonderful panel for highlighting the critical issues of diabetes management throughout a woman's life. I once again request Mr. Anil Rajput sir to please come on the stage and present the mementos to our esteemed panelists. Please give them a huge round of applause. So to start with, we now present the memento to Dr. Shalini Jaggi, a wonderful moderator. Next we have Dr. Picky Saxena. Ma'am, please come in the front. Now we are presenting the memento to Dr. Himsweta Srivastava. Next we have Dr. Kamna Datta. Next we have Dr. Himika Chawla. Last but not the least, Dr. Richa Chaturvedi. I now request to each one of you, please come in the front for a wonderful group photograph.
Thank you, ma'am. Complications and comorbidities. So this will focus on early detection, prevention and the integrated multidisciplinary management of long-term complications. We will be discussing cardiovascular and renal complications, including diabetic kidney diseases, diabetic retinopathy, and vision health, and neuropathy. This will also touch on long-term risk reduction through a healthy lifestyle and technology. I once again invite our familiar moderator, Dr. Rajesh Kesri ji, to please come on the stage and please have a seat. Dr. Rajesh, please have a seat. And for this, we have our expert panels, Dr. Sanjeev Saxena, Chairman, PSRI Hospital, Delhi. Please give him a huge round of applause. Next, we have Dr. Dheeraj Kapoor, Head Endocrinology, Artemis Hospitals. Please give him a huge round of applause. Next speaker, Dr. Vinay Garodia, Founder Director, Synergy Eye Care. Let's give him a huge round of applause. And Dr. Neeraj Kumar, Senior Consultant, Department of General Medicine, Sharda Care Health City. Please give him a huge round of applause. So Dr. Kesri, the stage is again yours. So once again, welcome you all. मैं सोच रहा था कि इसकी शुरुआत कैसे करूं, तो मुझे एक वाकया याद आया कि हमारे यहाँ क्लिनिक में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होते हैं, तो एक किसी मरीज़ का टेस्ट हुआ तो उनकी शुगर 800 से ज़्यादा आई। तो उस मरीज़ को मैंने भी देखा था, तो शाम को आया रिपोर्ट लेने, बहुत नाराज़, डॉक्टर साहब आपकी लैब बेकार है, आप लोग गलत रिपोर्ट देते तो हो ही नहीं सकता, देखो मैं घूम फिर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर हमने ऑब्वियसली उसकी शुगर तो चेक की थी दोबारा, तो वो तो ज़्यादा ही थी। उसके बाद वो हमसे नाराज़ हो गया, हमारी कंप्लेंट वगैरह करके उस और जगह गया और 5-6 जगह उस शुगर चेक कराई, सब जगह शुगर उसकी उतनी आई। फिर वो वापस आया मेरे पास, वापस आके उसने मुझे सॉरी बोला, सर आपने रिपोर्ट सही दी थी, मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैं आपको इतना बुरा भला कह गया। तो मैं ये इसलिए बोलना चाहता हूँ कि वी अंडरस्टैंड कि जो हम शुगर का एक नंबर देखते हैं, 100 है, 150 है, 200 है, 300 है, 400 है, अपने आप में इस नंबर का कोई मायने नहीं है। हम क्यों कहते हैं कि आपकी शुगर का नंबर जो है फास्टिंग 100 या 110 से कम होना चाहिए, ये खाने के बाद 140 से कम होना चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो 300 हो भी तो क्या जाता है, कुछ नहीं जाता, बट उससे नुकसान होता है अगर शुगर आपकी बढ़ी रहे। और अब तो हम बात करते हैं टोटल कंट्रोल की, मतलब शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ABC ऑफ डायबिटीज़, अगर ये सब चीज़ें बढ़ी रहें तो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन होते हैं, डायबिटीज़ के दुरअसर होते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी तकलीफ़ें और परेशानियां होती हैं। ये फैक्ट है कि 60% डायबिटीज़ के मरीज़ों की डेथ डायबिटीज़ की वजह से नहीं होती, डायबिटीज़ ऐसा की जो परेशानियां होती हैं उससे नहीं होती। 60% मरीज़ों की डेथ जो है वो हार्ट की बीमारी से होती है। तो उनकी शुगर बढ़ी है लेकिन उनको हार्ट अटैक क्यों हो रहा है, उनको स्ट्रोक या पैरालिसिस जिसे लकवा मारना कहते हैं, ये क्यों हो रहा है? तो शुरुआत करते हैं डॉक्टर धीरज सर से, ऐसा क्यों होता है? देखिए, पहली बात तो बिल्कुल सही कहा कि जो कॉमनेस्ट कॉज है डेथ का वो डायबिटीज़ में वो हार्ट डिजीज़ है, लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारी पॉपुलेशन में
वेस्टर्न की बनिस्बत हार्ट डिजीज़ 1 डेकेड पहले होती है। ये बहुत जानने की ज़रूरत है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ओबेसिटी या गलत जगह पे वेट, बल्कि बेली रीजन में, ये मदर है, और इसके जो बच्चे हैं वो हैं डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल, डिस्लिपिडीमिया। तो जिस तरह एक माँ के 3 बच्चे, कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है, तो ऑन अ सिमिलर नोट हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ एंड कोलेस्ट्रॉल दे रन टुगेदर, वन मे बी अर्लियर, वन लेटर। तो अगर तीनों ही चीज़ें हैं तो टोटल एक रेसिपी तैयार है हार्ट अटैक के लिए। आपकी शुगर्स अनकंट्रोल्ड हैं, उससे एक चीज़ है ट्राइग्लिसराइड, वो बढ़ेंगे, तो कोलेस्ट्रॉल को वो ज़्यादा बनाते हैं जो चिपकता है वेसल्स में। दूसरा हाई एलडीएल है तो वो चिपकता है, और तीसरा ब्लड प्रेशर भी जो आर्टरीज है उनको डैमेज करता है, और ब्लड प्रेशर हार्ट पे भी लोड डालता है। तो हार्ट को ब्लड सप्लाई कम पहुंच रही है, काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो देर सवेर चांस बढ़ जाता है हार्ट अटैक का। यही प्रक्रिया चलती है चाहे वो पैरों में डिजीज़ हो आर्टरीज की या स्ट्रोक हो। फर्क सिर्फ इतना है कि ब्लड वेसल्स की साइट बदल जाती है, लेकिन चीज़ें वही सारी रहती हैं। इसीलिए जैसा आपने कहा कि होलिस्टिक कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ मतलब कि ब्लड शुगर भी मेंटेन करनी है, कोलेस्ट्रॉल भी मेंटेन करना है, और ब्लड प्रेशर भी मेंटेन करना है। थैंक यू सर। तो सर ने हमें बताया कि डायबिटीज़ होने की वजह से, डायबिटीज़ की जो मूल वजह है, जो हमारे पेट में फैट या चर्बी है जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, और उसके रिज़ल्ट में ये सब बीमारियां हो रही हैं, तो हमें इन सब को शुरुआत से कंट्रोल करना ज़रूरी है। और हम सुबह से अलग अलग लोग अलग अलग तरह से इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक, इसकी हमने बात की। तो कुछ कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ की, वो तब होती हैं जब डायबिटीज़ लंबे अरसे तक बढ़ी रहे, मतलब शुगर काफ़ी समय तक बढ़ी रहे, जैसे 15 साल 20 साल। इसको हम माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं, कि जो प्योरली शुगर बढ़े रहने से होती हैं। तो इसमें एक ख़ास जगह है जो हमारी किडनी की समस्या, किडनी की कॉम्प्लिकेशन, नेफ्रोपैथी हम जिसे बोलते हैं। तो डॉक्टर संजीव सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें बताएं कि किडनी की क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती हैं, कैसे उनकी जांच कब करनी चाहिए, थोड़ा हमें संक्षेप में बताइए। Let me first give you the good news, because doctors will scare the public to believe that everybody is going to develop all the complications that are listed. So the good news is only 1/3 of the patient with diabetes will ever have a renal problem, kidney problem. तो माइक्रोवास्कुलर डिजीज़ ज़रूर है, और पूरा ऑर्गन जो किडनी का है वो माइक्रोवास्कुलर है। छोटी छोटी कैपिलरीज हैं जिनकी छन्नियाँ होती हैं, स्पेशल छन्नियाँ होती हैं जिनको ग्लोमेरुलस कहते हैं। सो दे आर गोइंग टू गेट अफेक्टेड वेरी अर्ली। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों ने ये सोचना है कि भाई मैं तो उन 2/3 में आऊँगा जिनको नहीं होनी है। तो द ट्रिक इज़ दैट एवरीबडी मस्ट फील that he is likely to develop a diabetic kidney. So what should he do? And how will he pick up? So if it is type 2 diabetes, which is the diabetes that adults will have in India, जिस समय डायबिटीज़ डायग्नोज हो उसी टाइम आपको किडनी के टेस्ट कराने हैं। कोई किडनी का महंगा टेस्ट नहीं है, सिंपल यूरिन रूटीन कराइए, और अगर उसमें प्रोटीन नील है तो एक और टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया। द वर्ड डिस्क्राइब्स इटसेल्फ। माइक्रो मीन्स बहुत थोड़ा, एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन ब्लड का है, और वो यूरिन में निकलना नहीं चाहिए। ये टेस्ट फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन में होता है, और जिस दिन आपको पता लगे डायबिटीज़ उसी दिन आप ये टेस्ट कराइए। फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन दीजिए, अगर इसमें ये पॉजिटिव आता है तो इसको दोबारा रिपीट करिए अगले 3 से 6 महीने में कम से कम 2 बार, और तो टोटल 3 बार। इफ़ 2 of the 3 samples show microalbuminuria, they are positive, then you are the one who is likely to develop kidney disease. और क्या फीचर्स होते हैं जो बताएंगे किसी डायबिटिक को कि मुझे मेरी किडनी खराब हो सकती है? एक है पुअर ब्लड कंट्रोल।
अगर आप अपना HbA1c 6.5 और 7 के बीच में नहीं रख रहे हैं तो आपकी किडनी खराब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरा, ब्लड प्रेशर। इफ़ यू हैव ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़ टुगेदर, द रिस्क ऑफ डेवलपिंग माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन, नॉट जस्ट किडनी, आर इंक्रीज सेवरल फोल्ड। थर्ड इज़ ओबेसिटी। अगर आप ओबीज हैं तो ज़्यादा चांस है किडनी खराब होने का। फोर्थ इज़ स्मोकिंग। तो अगर आप स्मोकर हैं वर्सेस नॉन स्मोकर, स्मोकर्स विल डेवलप मोर किडनी प्रॉब्लम्स। देन इज़ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी फैमिली में किसी को किडनी डिजीज़ डायबिटीज़ की वजह से हुई है तो आपको ज़्यादा चांसेस हैं होने के। तो ये सारे फीचर्स हैं और आप क्विक एक यूरिन टेस्ट से पता लगा सकते हैं। You will be surprised to know that several of the diabetics are first time picked up because उनका शुगर लो हो गया है और वो चक्कर खा के हॉस्पिटल पहुँचे हैं। और लो शुगर का कारण ये होता है कि अब किडनी ख़राब हो गई है और उसकी वजह से जो इंसुलिन निकल रहा है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है शरीर में, इंसुलिन लेवल्स बढ़ गए हैं और हाइपोग्लाइसीमिया और रीनल फेलियर इकट्ठे होते हैं। तब आपको पता लगता है कि उसको सारे डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन हैं। आई थिंक आई विल स्टॉप हियर एंड डॉक्टर राजेश। थैंक यू। और आपके बिल्कुल साथ में डॉक्टर गरोडिया सर बैठे हैं और आँखों की कॉम्प्लिकेशन भी किडनी की कॉम्प्लिकेशन के साथ साथ होती हैं, तो आप साथ में ही बोलें तो अच्छा है। थैंक यू। सो द सेइंग इज़ कि अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है डायबिटीज़ में और अगर आँखों का रेटिना ठीक है तो चांसेस आर कि वो डायबिटीज़ की वजह से किडनी की प्रॉब्लम नहीं है, कोई और कारण हो सकता है हो। सो आँखों की प्रॉब्लम किडनी से पहले शुरू हो जाती है, तो इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि रेगुलर चेकअप करें। जैसे डॉक्टर सक्सेना ने बताया कि जैसे ही आपको डायबिटीज़ डायग्नोज हो अपना यूरिन का सिंपल टेस्ट करवा लें। सेम वे आपको जैसे ही डायबिटीज़ का डायग्नोसिस हो आप जाके अपनी आँखों का रेटिना का टेस्ट जरूर करवा लें ना। कई बार होता क्या है कि मरीज़ों को हम बताते नहीं हैं कि आपको आँखों का रेटिना चेक करवाना है। दूसरा, मरीज़ सोचता है मेरे को तो ठीक दिख रहा है, मुझे क्या ज़रूरत है चेकअप कराने की। तीसरा, कभी कभी वो जाकर अपने चश्मे का नंबर चेक करा लेता है, उसको लगता है मैंने तो आँखें चेक करा ली। बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपको अपनी आँखों के रेटिना का चेकअप कराना है, क्योंकि आँखों में जो रेटिना होता है जो पीछे की तरफ होता है जहाँ पे सारी इमेजेस बनती हैं, दैट इज़ द ओनली प्लेस इन द बॉडी जहाँ हम ब्लड वेसल्स को डायरेक्टली देख सकते हैं। आप डायरेक्टली देख सकते हो कि ब्लड वेसल्स में क्या क्या चेंज हो रहे हैं। जैसा कहा माइक्रोवेस्कुलर पैथोलॉजीज़ होती हैं, आप वहाँ पे डायरेक्टली चेंजेस को डिटेक्ट कर सकते हो। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज इज़ दैट द मोमेंट आपको डायग्नोसिस हो डायबिटीज़ का, अपनी आँखों का रेटिना का चेकअप आपको करवाना है और उसके बाद में अगर सब कुछ ठीक है तो हर साल में कम से कम एक बार चेकअप होना है। एंड ऑफ कोर्स कोई प्रॉब्लम हो तो पहले चेकअप कराना है। आज की तारीख में बहुत सारे नए नए टेक्नोलॉजीज़, बहुत सारे नए नए ट्रीटमेंट्स आ गए हैं हर एक बीमारियों के। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल for fighting diabetes and for that matter any disease is education. And I think this is where this kind of a forum is very important, because if we can educate the people to get timely checkups done, timely treatments done, proper diet, proper exercise, I think हम डॉक्टर्स को दवाइयाँ लिखने से ज़्यादा पेशेंट को एजुकेट करने में ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए, and that is very very important. So the most important thing is that diabetes retinopathy से जो नज़र चली जाती है वो वापस कई बार नहीं आती। सो डो नॉट वेट कि आपकी नज़र जाने के बाद आप डॉक्टर के पास जाओ। आपको डायबिटीज़ है, अगर आपकी नज़र ठीक है तब भी आप रेगुलर चेकअप कराइए, ताकि जितना जल्दी हम उसको पिक करते हैं उतना बेहतर हम उसको इलाज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स बहुत एडवांसेस हुए हैं ट्रीटमेंट में, उसके ट्रीटमेंट के लिए नए इंजेक्शंस, नए सर्जरीज आई हैं, लेकिन प्रिवेंशन इज़ एनी डे बेटर देन क्योर। एक बार नज़र जाने के बाद हम उसके पीछे भागें, उससे अच्छा हम आँखों का इलाज चेकअप रेगुलरली कराएँ, उससे आपको बाकी शरीर के बारे में भी आइडिया मिल जाएगा। सो एक डायबिटीज़ के मरीज़ को रेगुलरली आँखों का, किडनी का, हार्ट का, पैरों का सारे चेकअप्स रेगुलर बेसिस पे करवाने ज़रूरी होते हैं। थैंक यू सर। तो हम चेकअप के बारे में विस्तार से बात करेंगे। एक बात बताइए कि डायबिटीज़ के मरीज़ों को ग्लाउकोमा, कैटरैक्ट ये भी ज़्यादा होता है क्या? हाँ, तो डायबिटीज़ में ग्लाउकोमा के भी रिस्क थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो ग्लाउकोमा एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी ये दोनों बीमारियां ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि उसकी गई हुई नज़र वापस नहीं आती, इसलिए हम उसमें ज़्यादा क्रिटिकली उसको फॉलो करना चाहते हैं। तो जब आप चेकअप के लिए जाओगे तो डॉक्टर आपका विजन भी चेक करेगा, प्रेशर्स भी चेक करेंगे और ग्लाउकोमा के भी चेंजेस देखेंगे। कैटरैक्ट भी कुछ मरीज़ों में जल्दी हो जाता है,
बट कैटरेक्ट के बारे में हम ज़्यादा चिंता इसलिए नहीं करते क्योंकि कैटरेक्ट की जो नज़र जाती है वो सर्जरी के बाद वापस आ जाती है. सो इट्स ओके, आपको 60 साल की जगह आपको 40 साल पे अगर कैटरेक्ट हो भी गया तो हेवेंस वोंट फॉल. तो कैटरेक्ट के बारे में आई एम नॉट गोइंग टू पुश. अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि आज की तारीख में हर कोई आदमी कैटरेक्ट की बातें कर रहा होता है. जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ पे कि विजन लॉस ज़्यादा परमानेंट होता है उसकी बातें कम करते हैं, जैसे रेटिना हो या ग्लोकोमा हो. कैटरेक्ट की जो नज़र जाती है, आपने सर्जरी कराई, मुश्किल से 7-8 मिनट की सर्जरी होती है, यू गेट द विजन बैक. सो इन इंडिया जैसा बताया था, डायबिटीज़ जल्दी होता है, हमारे यहाँ हार्ट डिजीज़ जल्दी होते हैं, सिमिलरली हमारे यहाँ कैटरेक्ट भी जल्दी होता है. तो समाव हम इंडिया में हर एक चीज़ करीब 10 साल पहले हमारे यहाँ आती हैं. एंड नाउ इन फैक्ट आई एम 53 ईयर्स ऑफ एज. अब कई सारे पेशेंट जो मैं ऑपरेट करता हूँ कैटरेक्ट, दे आर यंगर देन मी ऑल्सो. सो आई एम सीइंग पेशेंट्स जो कि 40 साल में, 45 साल में, 50 साल में उनको कैटरेक्ट हो रहा है, इवन नॉन डायबिटिक पेशेंट्स. एंड डायबिटिक पेशेंट्स में और पहले भी हो सकता है. सो कैटरेक्ट के बारे में आप चिंता ना करो. जब आपको नज़र में दिक्कत हो रही है आप अपने डॉक्टर को दिखाइए. अगर आपको सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है आपकी सर्जरी हो जाएगी, और अगर नहीं है तो आप वेट भी कर सकते हो. बट रेगुलर रेटिना चेकअप एंड प्रेशर चेकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू सर. डॉक्टर नीरज सर, सो डज डायबिटीज़ हैव एनी रिलेशनशिप विद डिप्रेशन? ऐसा होता है क्या कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनको डिप्रेशन ज़्यादा होता है? ऑल क्रोनिक डिजीजेज आर रिलेटेड विथ डिप्रेशन. जितने भी क्रोनिक डिजीज़ हैं, क्योंकि उनका जो रेगुलर लाइफस्टाइल है जिसके लिए वो एकस्टम्ड होते हैं पहले, एक समय के पहले, जब उनको उनकी ज़िंदगी में ये पिल्स, ये इंजेक्शंस जब भी ऐड होते हैं, और जब उनको ये चीज़ें पता चलती हैं कि अब ठीक नहीं होगा. डायबिटीज़ भी एक ऐसा चीज़ है जिसमें कि लोग हमेशा ये चीज़ जानते हैं कि अब ये मेरा ठीक नहीं होगा, दवाइयाँ बढ़ती जाएंगी. तो ऐसे चीज़ें, ऐसे हर क्रोनिक डिजीज़ की तरह डायबिटीज़ भी डिप्रेशन कॉज करता है. लोग बहुत कम ये चीज़ एक्सेप्ट कर पाते हैं कि मुझे डिप्रेशन है, लेकिन उनका जो सिम्टम होता है, उनकी जो डेली एक्टिविटी होती है धीरे धीरे स्लो होते जाती है, और दवाइयों के बोझ से वो लदते जाते हैं. लेकिन फिर भी डिप्रेशन एक्सेप्ट करना उनके लिए मुश्किल होता है. लेकिन करीब करीब 70% लोगों को, जो कि 70 से ज़्यादा की उम्र के हैं, उनको डिप्रेशन कहीं ना कहीं होता है, और दे रिस्पॉन्ड वेरी वेल टू स्मॉल डोजेज ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स. थैंक यू सर. इसमें मैं यही ऐड करना चाहूँगा कि डायबिटीज़ बीमारी की जो टाइप 2 डायबिटीज़ खास तौर पे होती है, उसका एक मेन रीज़न है इंसुलिन रेजिस्टेंस. और ये जैसा डॉक्टर धीरज सर ने बताया कि जो पेट में हमारी चर्बी ज़्यादा हो रही है उसकी वजह से ये कैस्केड है जो ये सब चीज़ें हो रही हैं. और अब हमें मॉडर्न साइंस ये बताती है, मेडिकल साइंस, की डिप्रेशन के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, वो है इन्फ्लेमेशन. वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो टाइप 2 डायबिटीज़ में होती है, वज़न ज़्यादा होने की वजह से होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है. तो डायबिटीज़ और डिप्रेशन ये 2 बीमारियां हैं जो साथ साथ चलती हैं. और ये देखा गया है कि जिन लोगों की डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहती, उनको ऐसे 50% लोगों को मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स एक साल में हो सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक ऑर्गेनिक वजह है. ये बीमारी इसका कारण बन रही है, क्योंकि डिप्रेशन अपने आप में एक बीमारी है जिसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं. हमने कुछ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात की. अब हमें कैसे पता चले कि अगर किसी को डायबिटीज़ है तो वो स्वस्थ है कि नहीं, और क्या क्या टेस्ट करने चाहिए जिनसे हमें इसके बारे में पता चल सकता है? तो डॉक्टर धीरज सर आप बताएंगे. थैंक यू. बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है. तो एक तो डायबिटीज़ 2 तरह की होती है, एक टाइप 1 और टाइप 2. और टाइप 2 ज़्यादातर लोगों को होती है जो थोड़े से एल्डरली होते हैं, जिनका वज़न ज़्यादा होता है, जिनकी परिवार में हिस्ट्री होती है. तो जो टेस्ट हैं, पहली बात तो हम फोकस करें कि शुगर कितनी है, दूसरा कि कैसा कंट्रोल रहा है, और तीसरा कि किस किस अंग पे उसने असर डाला है अभी तक, है ना. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जहाँ तक घर की बात है, मेरे ख्याल में ग्लूकोमीटर एक बहुत अच्छा ज़रिया है चेक करने का. बातें फैलाई जाती हैं कि साहब ये एक्यूरेट नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो रिकमेंडेड है. लेकिन उसमें ध्यान रखना है, लोग खाली पेट और भरे पेट शुगर्स चेक करते हैं, और भरे पेट को मान लिया है कि दिस इज सिनोनिमस या नाश्ते के बाद का पर्याय है, विच इज़ नॉट द केस. जो पोस्ट पैंडल भरे पेट है वो नाश्ते के बाद भी होती है, लंच के बाद भी होती है, डिनर के बाद भी होती है. सो मैं ये नहीं बोल रहा कि दिन में 4 दफ़े चेक करिए, बट
रोज़ एक बार चेक करिए पर अलग अलग टाइम पे। सबसे बड़ी मुश्किल होती है पोस्ट डिनर, क्योंकि खाना खाया और सो गए और उसके बाद चेक नहीं करते। तो जो भी पेशेंट आते हैं हमारे हॉस्पिटल में, हम तो करते हैं पोस्ट डिनर, उनकी यही कंप्लेंट होती है कि साहब आज तक तो कभी हाई हुई नहीं। तो सवाल ये है कि आपने कितनी बार चेक किया, और उसका आंसर हमने किया ही नहीं। जब करोगे नहीं तो हाई कैसे आएगी, दैट इज़ वन। दूसरा HbA1c जो 3 महीने का एवरेज बताता है, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो भी शुगर के कॉम्प्लिकेशंस लिंक किए गए हैं वो HbA1c से लिंक किए गए हैं, और दूसरा कि इतना फॉल आया तो कितना सुधार हुआ। तो HbA1c बहुत इंपॉर्टेंट है, और शुगर्स कंट्रोल हैं किंतु HbA1c ज़्यादा है। उसका मुख्य कारण ये है कि हमारी पोस्ट डिनर या पोस्ट लंच शुगर बढ़ रही है। फास्टिंग और पोस्ट नाश्ता तो हर आदमी चेक कर लेता है। ये तो हुई बात शुगर की। कुछ स्थितियां ऐसी हैं, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, जिसमें HbA1c बहुत इंफॉर्मेटिव नहीं होता। तो उसमें एक होता है फ्रक्टोजामिन टेस्ट जो 2 हफ्ते का बताता है एवरेज क्या है। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। जब भी टाइप 2 डायबिटीज डायग्नोज हो, किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन, कोलेस्ट्रॉल मतलब कि लिपिड प्रोफाइल, फास्टिंग या नॉन फास्टिंग, हार्ट की स्क्रीनिंग मुख्य तौर पर ECG और TMT, पॉसिबली एको, डॉक्टर साहब ने कहा कि आई टेस्टिंग और यूरिन माइक्रोएल्बुमिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन दूसरी स्टेटमेंट ये थी कि एक वैल्यू पे हमको रिएक्ट नहीं करना है, अगले 3 से 6 महीने में 2 बार और टेस्ट करना है, बिकॉज कुछ स्थितियां होती हैं जिसमें किडनी डैमेज नहीं होती फिर भी माइक्रोएल आ सकता है। तो उसे नेगेट या ऑब्विएट करने के लिए हमको ये टेस्ट करने चाहिए। फुट के इन्वेस्टिगेशंस बहुत ज़रूरी हैं। तो वो दूसरा ये है कि एक आई है चीज़ CGMS, यहाँ पर लग जाता है सेंसर, और उससे आप कभी भी यहाँ पर लगा करके शुगर चेक कर सकते हैं। बार बार पोकिंग की उसमें आवश्यकता नहीं होती है। लास्टली, जब भी इंसुलिन जब भी शुरू करते हैं तो आपको शुगर चेक करनी है, क्योंकि अगर आप शुगर चेक नहीं कर रहे हैं, इंसुलिन डोज टाइट्रेट मतलब ऊपर नीचे नहीं कर रहे हैं, इंसुलिन चालू करना व्यर्थ है। सो फॉर ऑप्टिमल ग्लाइसेमिक कंट्रोल बाय इंसुलिन यू शुड चेक द शुगर्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय योर डॉक्टर, single, twice, thrice, and then titrate the dose for best results. Thank you, sir. I would just request you to give some information about diabetic neuropathy, peripheral neuropathy, autonomic neuropathy, क्योंकि आपने पाँव की अभी चर्चा की, तो इसका क्या महत्व है? जो न्यूरोपैथी है वो सबसे कॉमन और सबसे फिजिकली कष्टदायक सिम्टम है डायबिटीज़ का। कितने लोग आते होंगे, पैर में जलन है, झुनझुनी है, दर्द है और पैर सुन्न है। ऑन अ वेरी लेमन लाइक नोट, जो नसें हैं उनके पास 3-4 तरीके हैं अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराने के। नंबर 1 जलन, नंबर 2 झुनझुनी, नंबर 3 पेन। और अगर नसें बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो गई, मतलब बहुत डैमेज हो गई, तो आपसे बात ही नहीं करेंगी, मतलब सुन्न हो जाएंगी। फिर चाहे आपको कील चुभे, चाहे कंकड़ चुभे, वो पेन नहीं होगा। और अब सर्दियां आ रही हैं, रेडिएटर के पास अगर पैर रखेंगे, लोगों के पैर जल जाते हैं, उनको महसूस नहीं होता। गांव में जो लोग फर्श पे सोते हैं, चूहा पैर में काट जाता है, दर्द नहीं होता। तो इंजरी होगी, पैर पकता रहेगा, और ये लॉन्ग स्टैंडिंग में होता है तो क्लियर सी बात है, अगर इतनी लॉन्ग स्टैंडिंग है तो घाव भरने में दिक्कत आती है। एक होती है ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी, शरीर का कोई ऑर्गन नहीं है जो शुगर, जो नसें सप्लाई नहीं करती, चाहे वो हार्ट हो, चाहे आंतें हो, चाहे किडनी हो, चाहे ब्लैडर हो। तो ऐसे लोगों में ये है कि कई बार हार्ट अटैक होता है, पेन नहीं होता, साइलेंट अटैक। आंतों में तो डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, कभी कुछ कभी कुछ। दूसरा, बहुत रेयरली यूरिन रिटेंशन हो सकता है इन डायबिटिक यूरोपैथी, और उसमें अगर होता है तो कई बार कीटाणु पनपते हैं एंड मे कॉज UTI और रिवर्स करके किडनीज तक पाइलोनेफ्राइटिस वो भी हो सकता है। सो ये थे, बट आई थिंक ये बहुत लेट स्टेज में होता है, और बट जनता के लिए ज़रूरी यही है कि हम किडनी, लिवर, हार्ट, आइज़ और नसों के टेस्ट कराएं। हालांकि जैसे डॉक्टर धीरज ने बताया कि ये कॉम्प्लिकेशन लेट स्टेज में होती हैं, लेकिन अक्सर
जब डायबिटीज़ के मरीज़ हमारे पास पहली बार आते हैं, और जो सबसे पहली बार आते हैं उनकी समस्या ये होती है कि उनके पाँव में जलन है, झुंझुनी है, या उनको आँखों की समस्या हो सकती है, या माइक्रो एल्बुमिन हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि जो डायबिटीज़ के मरीज़ जब पहली बार इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तब भी उनको होते हैं। इसका मतलब कि कितनी देर से उनको डायबिटीज़ के बारे में पता चला है। एक चीज़ के बारे में यहाँ और बताऊँगा कि पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें पाँव को जो खून की नलियाँ जा रही हैं, जो पाँव के अंदर जा रही हैं, जो नीचे तक जा रही हैं, वो सिकुड़ जाती हैं, उनके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। जैसे आपने शुरुआत में बताया कि जो हार्ट की नसों में, जो खून की नलियों में होता है कि उनका साइज़ जो है अंदर का वो कम हो जाता है, ऐसे ही पाँव में हो जाता है। तो पाँव को अपने काम के लिए, पाँव की मांसपेशियों को खून सही मात्रा में नहीं मिलता। तो जैसा आपने बताया कि अगर नसें भी खराब हो जाएं और खून का प्रवाह भी कम हो जाए तो आदमी को कुछ महसूस नहीं होगा, और अगर घाव कोई हो जाए जो किसी भी वजह से हो सकता है, वो ठीक नहीं होगा, तो अंततः क्या होता है कि उस पाँव के हिस्से को काटना पड़ता है। इसको हम एम्पुटेशन बोलते हैं। तो एक्सीडेंट के बाद हमारे देश में एम्पुटेशन की सबसे बड़ी वजह यही है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़। तो इसीलिए पाँव का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, पाँव का रोज़ निरीक्षण करना ज़रूरी है कि पाँव के तलवे में दरार न हो, कोई घाव ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो। और ये सब जांचें जो अभी बताई हैं, ये सब करना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर नीरज सर, व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज टेस्ट? जो बेसिक टेस्ट आपने बताए हैं जैसे HbA1c, लिपिड प्रोफाइल और लिवर किडनी के टेस्ट, इनकी क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए? मतलब साल में, महीने, कितने महीने पे करने चाहिए? जो सबसे बेसिक टेस्ट है इसमें HbA1c, इट शुड बी डन एवरी 3 months, क्योंकि ये 3 महीने का एवरेज शुगर दिखाता है। बाकी जो लिपिड प्रोफाइल, इट्स रिकमेंडेड कि एवरी 6 months होने चाहिए। रेटिनोपैथी के लिए एवरी ईयर, एंड एवरी ईयर 2D इको इज रिकमेंडेड। हर साल एक बार तो पूरी बॉडी का जिस भी ऑर्गन को टारगेट ऑर्गन्स बोलते हैं, जैसे हार्ट, आँख, इनका चेक होना चाहिए कि उसमें अभी तक शुगर का कोई इफेक्ट आया है कि नहीं। आइडियली एवरी मंथ 1 शुगर फास्टिंग पीपी शुड बी डन। ये हर महीने एक बार शुगर फास्टिंग पीपी हर डायबिटिक आदमी को करना चाहिए। वो सेल्फ होम बेस्ड ग्लूकोज मॉनिटरिंग होनी चाहिए, इसके लिए लैब जाने की ज़रूरत नहीं है, ताकि उनको हर महीने पता रहे कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा शुगर कहीं बहुत ख़राब तो नहीं हो रहा, सो दैट दे कैन कॉन्टैक्ट अ डॉक्टर। और बहुत हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं हो रहा है, तब भी उनको डॉक्टर कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। बाकी यदि चीज़ें नॉर्मल रेंज में चल रही है तो एवरी 3 months दे शुड डू HbA1c टेस्ट और अपने फिजिशियन को विजिट करना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर संजीव सर, लोग जानना चाहते हैं कि डायलिसिस की कब आवश्यकता होती है और रीनल ट्रांसप्लांट, इसका क्या महत्व है और ये आसानी से हो सकता है हमारे देश में कैसे? 2 शब्द इन ब्रीफ। Dialysis is needed when your kidney function reduces drastically, and for diabetics less than 15%. तो 15 ml पे आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। Transplant is a good option if your heart is good and you don't have any other complication which is likely to progress after transplant। तो वो क्या complications हैं? जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़, अगर सीवियर पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ है, एम्पुटेशंस हो रखे हैं, तो शायद ट्रांसप्लांट के लिए आप उतना फिट नहीं है। या आपका हार्ट का फंक्शन 15% है, सेवरल हार्ट अटैक्स हो चुके हैं, स्टेंट्स पड़ चुके हैं और हार्ट पुअर है, तो उस स्थिति में नहीं हो सकता। अदरवाइज bulk of our transplants are done with in diabetics only, and they all do very well, because by that time they are now very clear in their head that they are suffering from complications of diabetes and this is a second life, and they look after their health pretty well. Transplant मुश्किल नहीं है, देश में हर शहर में कई सेंटर्स कर रहे हैं। प्रॉब्लम डोनर्स की है, घर में डोनर होना चाहिए। डायबिटिक्स के साथ स्पेशली मुश्किल है क्योंकि उनके परिवार के और लोगों को भी डायबिटीज़ होती है, तो ये एक मुश्किल आती है। ज़्यादातर में स्पाउस डोनेट करती है। थैंक यू।
आँखों की बात करें, रेटिनोपैथी के इलाज में तो पहले सब लोग जानते थे कि लेज़र से इलाज होता है। कुछ नई ऐसी चीज़ आई है जिससे बेहतर इलाज होता हो? हाँ, तो जहाँ तक मैंने कहा कि डायबिटिक रेटिनोपैथी को अर्ली से अर्ली ट्रीटमेंट करना चाहिए, और जो नज़र चली जाती है वापस नहीं आती, दैट हैज़ बीन द क्लासिकल टीचिंग। बट द गुड न्यूज़ इज़ कि अब कुछ नए इलाज आए जिससे कुछ नज़र वापस आ जाती है, बट अगेन इट डजंट कम बैक टोटली नॉर्मल। तो लेज़र अभी भी एक गोल्ड स्टैंडर्ड है, प्रोलिफरेटिव स्टेज ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए लेज़र इज स्टिल द गोल्ड स्टैंडर्ड। बट कुछ नए ऑप्शंस आए हैं, जैसे हम आजकल आँखों के अंदर स्पेशल एंटी-VEGF इंजेक्शंस लगाते हैं जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और कभी कभी एंड स्टेज डिजीज़ में उनको सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है, जब आँख के अंदर खून वगैरह आ जाता है या पर्दा गिर जाता है। सो आजकल वो मशीन्स एंड टेक्नोलॉजीज़ एंड एक्सपर्टीज़ काफ़ी अच्छी हो गई हैं, सो रिजल्ट्स हैव रियली बिकम मच बेटर देन व्हाट इट यूज्ड टू बी। बट फॉर अ जनरल पब्लिक दे हैव टू नो दैट द प्रिवेंशन इज़ एनी टाइम बेटर। बट हाँ, अगर आपको डायबिटीज़ की बीमारी ऑलरेडी रेटिना में आ गई है तो डोंट लूज़ होप। आज की तारीख में बहुत सारे इलाज हैं, बट अगेन वहाँ भी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ एजुकेशन, बिकॉज ये वन टाइम इलाज नहीं होता, आपको उसके बाद रेगुलर चेकअप करते रहना होता है। तो अगर आपको इंजेक्शंस लग रहा है तो आपको ज़िंदगी भर जो है रेगुलर चेकअप करवाते रहना, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड इंजेक्शंस विल बी गिवन। सो अगेन देयर ऑल्सो आई ऑलवेज डू इज़ दैट जब पेशेंट मेरे पास आता है, आई ट्राई टू एजुकेट देम एंड मेक देम पार्टनर्स इन देयर ओन हेल्थ केयर, बिकॉज स्टिल दे अंडरस्टैंड व्हाट इज़ टू बी डन। वो 2 या 3 इंजेक्शन लगा के बाद में गायब हो जाएंगे। सो एवरी स्टेज दैट वी मीट द पेशेंट, हमें उन्हें एजुकेट करना है, उनको मोटिवेट करना है, ताकि वो बार बार हमारे पास आते रहें। Thank you. I think this was a very good statement that our patients are our partners in the healthcare. We'll come to the questions. So I think we had a very engaging discussion, and I'm very thankful to all our panelists, co-panelists. I would request each of you to give a short message to our audience, starting with you, Dr. Neeraj. हम लोग अपने ओपीडी में सबसे अधिक ये फेस करते हैं कि सर मेरा शुगर नॉर्मली इतना ही होता है, जैसे मेरा नॉर्मली शुगर 200 होता है। तो सबसे पहले हमको पेशेंट को ये एडुकेट करना चाहिए कि नॉर्मली शुगर नहीं होता। नॉर्मल शुगर फास्टिंग शुड बी 125, लेस देन 125, एट एनी टाइम इट शुड बी 200, लेस देन 200 आफ्टर फूड। ये चीज़ें लोग मानने से इनकार करते हैं। जिस दिन उन्होंने अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे डायबिटीज़ है, उनका 50% इलाज हो गया। तो ये चीज़ें बतानी, उनको समझानी, ये हमारा ड्यूटी है कि हम उनको समझाएं कि आपको डायबिटीज़ है और आपको इलाज कराना पड़ेगा। थैंक यू। डॉक्टर धीरज सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और मैं एक बहुत स्ट्रेंज स्टेटमेंट पास कर रहा हूँ, पर वो है बिल्कुल पर्टिनेंट, दैट द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ स्टार्ट्स बिफोर द ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़। जब तक नहीं हुई तभी तक नहीं हुई है। सो अगर नहीं हुई है तो वेट ना करें कि हो जाए, तब वेट कम करें, तब परहेज करें। द सेकेंड इज दैट इज हाई टाइम दैट वी डोंट होल्ड ओबेसिटी एंड हेल्थ एज सिनोनिम्स। An obese person is anything but healthy. So, obesity is the mother of at least 128 diseases, and you must arrest obesity if you have to prevent them. Thank you. Sanjeev sir. My take-home message is that if you have diabetic kidney disease, don't get disheartened. There are now good drugs, and even if you develop end-stage kidney disease, the treatment with dialysis and transplant today is so advanced that there is nothing to lose heart. Of course, prevention is still the answer, and so early picking the microalbuminuria is the clue, and that is totally treatable. So on a humorous note, Dr. Dheeraj ka comment just before lunch aaya hai, so that's very important that we all remember his statement while we are having our lunch. So what we have decided, like I have always been very passionate about educating my patients. तो कल ही someone from my office was suggesting कि now we have been educating, हम अपने patients को हम educate कर रहे हैं. What we are trying to do from day after tomorrow, हम अपने सारे diabetic patients को message भेज रहे हैं कि now you are aware, अब आप 1 या 2 को और educate करो जिनको आप चाहते हो diabetes वालों को जानते हो, ताकि वो अपना checkup करवाएं regularly. So I think we have to make sure that we educate our patients and make them our brand ambassadors to educate other people, because जब वो बोलते हैं
उसका एक इम्पैक्ट अलग ही आता है कंपेयर टू जब डॉक्टर्स बोलते हैं. सो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू सेंड अ मैसेज टू एवरीवन. थैंक यू सो मच. और जो डॉक्टर धीरज ने बोला है, मैं उससे एक कदम और आगे जाके बताऊंगा कि आई एम श्योर यू ऑल वुड बी ग्लैड टू नो दैट Illness to Wellness Foundation is already working in this direction. We are conducting awareness camps, girl education in school, health awareness and education, because we believe in primordial prevention. Because diabetes starts, Dr. Picky is sitting in the front row and she actually was talking about the programming, how the fetus is programmed to become diabetic. जब बच्चा पैदा होता है तो उसको डायबिटीज़ का संस्कार मिलता है, जैसे डॉक्टर शालिनी ने, तो उस संस्कार से कैसे बचाना है, क्योंकि जब बच्चा पैदा हुआ उसकी गलती नहीं है, लेकिन उसके अंदर डायबिटीज़ है. एक तो उसके अंदर डायबिटीज़ का अंश है क्योंकि वो जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन है, दूसरा उस जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन के बाद वो ऐसे माहौल में पैदा हुआ, ऐसे माहौल में बढ़ा जहाँ पे उसको डायबिटीज़ का हमने बीज तो था ही, उसको पनपने का भी इशारा दे दिया. तो हमें शुरुआत वहाँ से करनी है कि जो होने वाली माताएं हैं वो स्वस्थ हों, और जब प्रेगनेंसी आए तो जिन चीज़ों के बारे में हमने बात की उनका ध्यान रखें. प्री कंसेप्शन काउंसलिंग की जाए. जो नवविवाहित होते हैं उनको पता हो कि उनके कंधे पे कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आगे जाके जो देश की जो जनरेशन्स आने वाली हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे है. और एक इस छोटी सी चीज़ से आगे आने वाली कई पीढ़ियों को फ़ायदा हो सकता है. तो डायबिटीज़ हैज़ टू बी कंट्रोल्ड एट दैट, इट हैज़ टू बी prevented at that stage, and that is what we are working on already. So I'm extremely thankful to all my panelists. Thank you so much for sparing your time and being with us. Thank you. So maybe we'll take one or two questions. Yes. शुगर है, और दूसरा है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, द सिम्टम ऑफ डायबिटिक. बस इतना ही पूछ रहे हैं. Yes, frequent urination is a symptom of diabetes, but not only diabetes. It can happen in many conditions. But ऐसे अगर है तो चेक कराइए. चीटियाँ आना एक हिंट है, बट गोल्ड स्टैंडर्ड है ब्लड शुगर टेस्ट कराइए और फिर उसके बाद. तो बट एनी विच वेज हर आदमी जो मोर देन 45 ईयर्स ऑफ एज है इंडिया में, उसको शुगर वैसे ही चेक करानी चाहिए, चाहे ये सिम्टम्स हों चाहे ना हो. थैंक यू सर. एक आप पीछे जो. I have one question, sir. My question is to Dr. Dheeraj Kapoor. There is a myth that to bring most of the people under diabetes, the range has been reduced. Any person who is a diabetes, should they follow the range of World Health Organization or American Diabetes Association or International Diabetes Federation? Okay, so first of all, this myth needs to be busted. The reason for reduction is that there's a certain threshold above which the risk of retinopathy that increases, and that happens to be fasting